Let's do 39. Machine used on a production line must be replaced at least every 4 years. Cost incurred to run the machine according to its age. So, age of the machine, they've given the purchase price, and they've given the 4 years maintenance cost and scrap value. Maintenance diya hai, repairs bhi diya hai, and scrap value. Future replacement will be identical machine with the same cost. Revenue is unaffected by the age of the cycle. That means revenue is not relevant in our decision making because it's going to be the same. Now, basically, which means we are not looking at NPV here. We are looking at outflows. Okay. Ignoring inflation and tax, determine the optimum replacement cycle. That means, should we replace the machine in year 1, 2, 3, or 4? PV factors of the cost of capital for the respective 4 years are given. So, we have to evaluate each of these scenarios. That is, replace the machine at the end of 1 year, end of 2 years, end of 3 years, and end of 4 years. Now, I'll just give you one. Sorry to interrupt. Today, you'll be starting new chapter. Why new chapter? Which chapter, Jay? एक मिनट जय नहीं सॉरी जय तुम्हारा यू आर जिनका डेरिवेटिव वगैरह नहीं हुआ है ना एंड विच सेंटर आर यू बोरीवली हाँ नहीं तो जय न्यू चैप्टर तो नहीं चालू करूंगा ओके बट वील हैव टू सी वेदर वी आर एबल टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे बिकॉज आई हैव माय ओन सीरियस डाउट्स एक बेवकूफियत का प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन एक तो गलत भी है और ऊपर से 4 पन्ने में जाता है राइट और बाकी लोग का तो सारा एफएम हो चुका है ओके सो नाउ let's take each of these scenario one by one. That is, if replacement is done, if replacement is done after 1 year. Now, नॉर्मल हम जैसा कैलकुलेट करते हैं दैट इज प्रिपेयर द पे ऑफ टेबल दैट इज ईयर 0, 1, 2, 3 sorry 1, 2, 3 क्यों we are trying to replace the machinery at the end of 1 year है ना so cash flows is negative 60,000. अच्छा इसको ना यहाँ पे कर लेते हैं कैश फ्लो 60,000 ईयर 1 का कैश फ्लो क्या होगा if the machine is going to be replaced at the end of 1 year? Maintenance 16,000 and minus 32,000 scrap value. There's no repair. So this will be 16,000 minus 16,000 plus 32,000. So this will be 16,000 positive. इसको डिस्काउंट कर देंगे at 15%. You'll get the discounted cash flows, and this should give you the PV of cash flows. PV of cash outflows. क्या हुआ? Huh? No, here you are just taking a decision as to whether you need to when would you want to replace it.
राइट, तो इतना ही आएगा ना। 46086 Kshitij, this is the final 46086. Okay, chalo. Then if replacement is done after 2 years, year 0, 1 and 2, cash flows. This is -60. Year 1 का आपका कॉस्ट आएगा 16,000, और ईयर 2 का 18, 4 and 24, -18, -4 plus 25. This would be 2,000 positive. इसको आप डिस्काउंट करो 15%, discounted cash flows 72,401. Year 2 का 18 and 4 -18, sorry, because here the machine is going to be replaced with the same machine, no? It's not going to be replaced with a different machine or which is going to have a different cash flows. तो यहाँ पे यू आर ओनली कंसिडरिंग कि ये मशीन 1 साल चलाने में कितना होगा, दूसरा साल चलाने में कितना होगा और तीसरा साल चलाने में कितना होगा कॉस्ट। हाँ, तो ईएसी निकालेंगे ना कल्पना। एक मिनट, ईयर 1 16, ईयर 2 -18, -4, 22, and year 3 -20, -8, 16, -20, -8 plus 16, 12,000 negative.
discount, sorry, PVIF at 15%, discounted cash flows, PV of cash outflows. Is कितना बताया? 98,438. हाँ हाँ मोबाइल एक guys just one. Sorry guys, कुछ टेक्निकल इश्यूज है. 98,438. Achal, loss में correction please. I did we not consider. अरे मनन, the machine is going to be replaced with the same machine after year 1, 2, 3. It's not going to produce any different revenues, right? तो आपने को खाली ये देखना है कि एक गिवन मशीन को 1 साल बाद करें, 2 साल बाद करें, 3 साल बाद करें. तो इफ यू टेक आउट द ऑपरेटिंग कॉस्ट और ईएसी निकालें तो विल गेट द सेम थिंग, नो? पहले सब जो होता था वो मशीन का अलग प्राइस होता था, उसका एक अलग लाइफ होता था.
आफ्टर 4 years का क्या आता है? हाँ 120। एक मिनट, क्षितिज तो कुछ और बता रहा है, 104389 बता रहा है। Parth is saying 124,968. क्षितिज तेरा आंसर चेक कर, बिकॉज एवरीवन इज सेइंग 124,968। चलो मैं कर ही देता हूँ यार। 0 1 2 3 4। ठीक है, कैश फ्लोस 60 16 22 60 16 22। ठीक है, फिर year 3 20 and 8। फोर का 20 16 8। 36 plus 28। सॉरी कितना बोला? 124,968 PV of cash outflows. Now EAC, replacement after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years। ठीक है, 124,968 कॉस्ट है। 3 years का 98,438। 2 years का 72,401 and 46,086। PVAF 15%, एक्सपीरियंस दैट इज जितने साल का है, राइट? सो कितना होगा? 0.8696, 1.6257, 2.2832। कितना? 5 पॉइंट कैसे आएगा यार 4 साल का? 8549। So EAC 46,086 divided by 0.8696, 52,997। Hey, 52,997, 72,401 divided by 1.6257, 44,535, 98,438 divided by 2.2832, 43,114, 124,968 divided by 2.8549।
43,773. Therefore, cheapest to replace the machine after 3 years. अच्छा, एक मिनट, एक काम करते हैं, इस पे अगर सैल्वेज वैल्यू जोड़ते हैं तो फर्क पड़ेगा क्या? आई मीन द न्यू, सॉरी, नॉट द सैल्वेज वैल्यू, द न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो खुद वापस 60,000 में आ रहा है, उसको डिस्काउंट करोगे, फिर ये एसी निकालोगे। ओके, फर्क तभी पड़ेगा जब डू वी नीड टू राइट द assumption that the revenue will be constant? No, why do you need to read the assumption? It is already given in the question. Question में जो, see, assumption Priya, you only write where it's not given in the question and you're assuming something. हाँ, मनन, how does that matter? तुम वापस EAC करने वाले हो और फिर उसका कॉस्ट लोगे तो फिर वो भी नया मशीन का कॉस्ट लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे एनपीवी थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हो, फिर वो मशीन का भी कॉस्ट आएगा, रेवेन्यू तो है नहीं, उसका तो सिर्फ कॉस्ट आएगा। और फिर वो मशीन तुम बोलोगे सर 1 ईयर 2 ईयर, यहाँ पे यू आर टेकिंग अ पॉलिसी डिसीजन एज टू, जनरली स्पीकिंग हम मशीन को ना अंडरस्टैंड, तुम लोग जो बोल रहे हो ना, मैं ईयर 1 2 3 4 यहाँ पे रिप्लेस करूं, आप बोलते हो सर नया मशीन का भी आप लो, तो फिर ये नया मशीन का कॉस्ट फिर 4 साल, और फिर वो नया मशीन भी 1 साल के बाद रिप्लेस होगा कि 2 साल के बाद रिप्लेस होगा, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा। ये तभी होता है जब नया मशीन का एक कॉस्ट होता है, उसका एक लाइफ होता है। क्या मनन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, चलो। क्या इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार? Trouble Free Solution is an authorized service center of a reputed domestic air conditioner machine. All complaint service related matters of air conditioner are attended by this service center. The service center employs a large number of mechanics, each of whom is provided with a motorbike to attend the complaints. Each mechanic travels approximately 40,000 kilometers per annum. TFS decides to continue its present policy of always buying a new bike for its mechanics, but wonders whether the present policy of replacing the bike every 3 years is optimal or not. It is of the belief that as new models are entering into the market on a yearly basis, it wishes to consider whether replacement of either 1 year or 2 year would be a better option than the present 3-year period. The fleet of bike is due for replacement shortly in the near future. The purchase price of the latest model bike is 55,000. Resale value of used bike at current prices in the market are ये 1 year 2 year 3 year का ये scrap value है. Running and maintenance expenses excluding depreciation are as follows. Using the opportunity cost of 10%, you are required to determine the optimal replacement period of same question, right? I mean, currently company कितने साल में replace कर रही है?
3 इयर्स में, बट उसको ये पॉलिसी रिव्यू करना है, राइट, कि भाई ये जो मैं 3 साल का फॉलो कर रहा हूं ये सही है कि नहीं। तो उसके पास चॉइस क्या है, आफ्टर 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स, इसमें से इवेल्युएट करो विच वन इज द बेस्ट एंड देन change your policy accordingly. So can you calculate this? Heading is same. If replacement is done after 1 year, replacement is done after 2 years, और यहाँ पे भी आपका सिर्फ कॉस्ट है, EAC निकलेगा लास्ट में। So, हाँ, in this question, it is written that running and maintenance expenses excluding depreciation. हाँ, So, यहाँ पे we'll have to take depreciation also, ना, if you're considering the number of years. अच्छा। एंड डेप्रिसिएशन यही आप लोग बिना सोचे समझे करते हो, और फिर डेप्रिसिएशन करके हाउ विल इट अफेक्ट द कैश फ्लो डेप्रिसिएशन? हाँ, it won't because tax अनलेस, is not given. हाँ फिर, Yeah. हाँ, But if tax rate was given, then we would have given. if elephant had wings and if they could fly and if the sky was cloudy, let's not get into all that, because तब अलग अलग चीजें होंगी। क्योंकि मैं आपको बोल दूंगा हाँ डेप्रिसिएशन दिया मतलब उसको करना चाहिए, तो आप कर दोगे। टैक्स रेट दिया है कि नहीं, टैक्स रेट दिया होगा लेकिन सम के नीचे दिया होगा इग्नोर टैक्सेशन, एवरी सम डील विथ इट अफ्रेश, नॉट इफ दिस सम में ये चेंज कर दिया तो। बट कमिंग टू योर आंसर, अगर डिप्रिसिएशन दिया होता, अगर टैक्स रेट दिया होता, देन यू वुड बी प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स स्टेटमेंट फर्स्ट, नो? व्हाट? Yes, sir. Understood. हाँ, इसीलिए। 53,182. Hello, sir. Yeah.
सर ये 55,000 जो हम ईयर 1 में कैश आउटफ्लो कंसिडर कर रहे हैं, वो हम न्यू मशीन का कंसिडर कर रहे हैं, ओल्ड मशीन का, बाइक का? एक मिनट, न्यू मशीन का कि बाइक का, मतलब यहाँ पे सॉरी, मतलब बाइक का कंसिडर, न्यू बाइक का कंसिडर करिए, या जो बाइक रिप्लेस कर रहे हैं उसका कंसिडर कर रहे हैं हम 55,000? एक मिनट, जो बाइक आप रिप्लेस कर रहे हो उसका डेटा क्या दिया है? हाँ, सो हम जो न्यू बाइक परचेज कर रहे हैं वो तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 परचेज करेंगे ना? कैसे? सी, ये यहाँ पे क्या दिया है? एक मिनट, कहीं पे दिया है ना कि द बाइक इज ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट इमीडिएट शॉर्टली, द फ्लीट ऑफ बाइक इज ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट शॉर्टली इन द नियर फ्यूचर। और एग्जिस्टिंग बाइक का तो कुछ दिया नहीं है, वो कितने साल का है क्या है। आपको खाली ये पॉलिसी फ्रेम करना है कि भाई हम अगर कोई भी बाइक खरीदते हैं तो उसको 1 साल में करना चाहिए, 2 साल में, या 3 साल में। देव नेवर सेड दैट एग्जिस्टिंग मशीन इतने में बिकेगा, उसका रेसिडुअल लाइफ इतना है, कुछ नहीं है ना। यू आर फ्रेमिंग योर पॉलिसी। तो रिप्लेसमेंट मीन्स दैट ओनली ना कि हम एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सपोज यू आर जस्ट ओपनिंग अ डोमिनोज फूड चेन, ठीक है, यस। और आपका दुकान एकदम नया खुल रहा है, तो उसमें आपको बाइक्स लगेंगे, राइट? एंड हाँ। यू वांट टू फ्रेम अ पॉलिसी कि यार ये बाइक्स जो हम खरीदेंगे, इसको 1 साल में रिप्लेस करें, 2 साल में, या 3 साल में, क्या करोगे? यू आर फ्रेमिंग अ पॉलिसी। ओके। व्हाट विल यू डू? यू डोंट हैव एनी एग्जिस्टिंग बाइक, बट हम्म। स्टिल अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, नहीं सर, हम तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट मतलब हमारे पास कुछ है, हम उसको रिप्लेस करेंगे। पर आप यस। तो नया दुकान खोल रहे हैं एंड यू आर डिसाइडिंग ऑन अ पॉलिसी कि 1 साल में करें, 2 साल में करना चाहिए, 3 साल में करना चाहिए, तो क्या करोगे? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ न्यू बाइक। एग्जैक्टली, यू आर गोइंग टू से कि बॉस ठीक है, हम बाइक खरीदेंगे तो उसको 1, 2, 3 साल में करें कि नहीं करें। ओके, Yeah? बट आई एम स्टिल गेटिंग कंफ्यूजन। Replacement after 1 year, so we will be purchasing a new bike after 1 year, na? How? If you're going to purchase after 1 year, then what is it that you have got to replace? Sorry, repeat. अगर आप बाइक ही 1 साल बाद खरीदने वाले हो तो आप रिप्लेस क्या चीज करोगे? 1 साल के बाद रिप्लेस तो तब करोगे ना जब आप आज बाइक खरीद लोगे। Yes. Okay, okay, got it. Thank you, sir. Year 2, 35 and 3, and 2-year-old 21,000. 38 and 21, 17. Negative. Answer for 1 will be 48, 348. As 2K of year 2 is positive. हाँ यार, बात तो सही कर रहा है मन, क्योंकि 55 minus 2 तो 53 हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 53 शुड बी लेस देन दैट, नो? अच्छा, 55 इज एट 0, बराबर, एंड 2000 विल गेट डिस्काउंटेड, तो 2000 गेट्स डिस्काउंटेड, तो फिर 1818। हाँ, तो फिर क्या है मनन? हाँ, एक मिनट रुक जा, 55 0 देखा नहीं मनन। हाँ, यू डिस्काउंटेड द फर्स्ट, मैंने भी जो किया। चलो, DCF ईयर 2 का
कितना? 9 99049। गौतम तो 94049 बोल रहा है। गौतम रुको, गौतम चेक कर रहा है। नाइनटी 99049 चलो। Cash flow 55,000, then -3 and -30, -33,000, and -3 and 35, -38, and third year 3, 43 and 9, 3, 43 and 9, -37 plus 9, -37. PVIF at 10%. अरे यार रिद्धिमा, ये कहाँ मैं फाइनल पढ़ा रहा हूँ यार, इसको ऐसा लिखो ना। हाँ रिद्धिमा, व्हाट द वेरी रीजन आई डोंट टीच इंटर, आप लोग मेरे को वहीं पे ले जा रहे हो। डिस्काउंटेड कैश फ्लोस कितना आ रहा है? 144202। therefore EAC, replacement after present value of cash outflow, PVAF 10% experience, and EAC. Right? Replacement after 1 year, 2 years, 3 years. This is 144202, 99049, 53182. EAC कितना आ रहा है? कितना? 58? ओके, 57? ओके, therefore
हो गया? चलो, एनीवन ऊपर नीचे कुछ स्क्रॉल करवाना है तो अभी बता दो यार, मैं मेहनत करके अगले सब में जाता हूँ, फिर कोई बोलता है। चलो, एक मिनट, अरे आंचल, फिर आंचल, वेयर डू यू वांट, विच वन डू यू वांट? मैं जब ये बोला ना कि मैं करने के बाद मत करो, मैं बोलते समय भी नहीं बोलेंगे, मैं बोल के खत्म करूंगा तब भी नहीं बोलेंगे, मैं अगला सब में चले जाऊंगा तब है। ये सी कर लो, कर लो, ये सी, ये रहा। चलो, हाँ हाँ मनन, बिल्कुल। ये बच्चे अगले 1 1.5 साल में बैलेंस शीट साइन करेंगे, हैं? पगार भी मांगेंगे। डन। अरे बाप रे, आंचल तो पूरा कैप्स लॉक करके चिल्ला रही है मेरे ऊपर, डन। ओके, चलो। XYZ, an infrastructure company, is evaluating a proposal to build, operate, and transfer a section of 35 kilometers of road at a project cost of 200 crores. So 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, to be financed as follows: equity share capital 50 crore, loans at the rate of interest of 15% from financial institution for 150 crores. Okay, okay. The project after completion will be open to traffic and a toll will be collected for a period of 15 years from the vehicles using the road. The company is also required to maintain the road during the above 15 years, and after completion of that period, it will be handed over to the highway authorities at zero value. It is estimated that the toll revenue will be 50 crores per annum, and the annual toll collection expenses, including maintenance of the road, will amount to 5% of the project cost. Okay. The company considers, एक मिनट, ये toll revenue will be 50 crores और उसके लिए खर्चा है 5% of the cost of the project. The company considers to write off the total cost of the project in 15 years on a straight line basis. For corporate income tax purposes, the company is allowed to take depreciation at 10% on WDV. Right? But यहाँ पे you'll see the financial institutions are agreeable for repayment of the loan in 15 equal installments consisting of principal and interest. Calculate project IRR, equity IRR. Ignore corporate taxation. See that? Abhi, who asked me the question? I think Sunidhi or Preksha or who, someone asked, no, depreciation दिया होता तो क्या करते? अगर मैं वहां पे जवाब देता ना, यहाँ पे फंसता। यहाँ पे depreciation दिया है और straight line नहीं दिया है, WDV दिया है, right? But fortunately, ignore corporate. Now the question, now someone, sir, if ignore corporate taxation was not given, then you know what? This problem would have got into a different orbit altogether, because अकाउंट्स के लिए आपको SLM निकालना पड़ेगा, टैक्स कंप्यूटेशन के लिए आपको WDV करना पड़ेगा, उस पर टैक्स निकालना पड़ेगा, वो टैक्स को इधर लाना पड़ेगा, लेकिन इधर डेप्रिसिएशन SLM पे चलेगा, वो देंगे नहीं वैसा। बट इन रियल लाइफ ऐसे ही होगा ना, क्योंकि बुक्स में आपका डेप्रिसिएशन अलग चलेगा, राइट, और उसका टैक्स उधर कुछ अलग चलेगा। सो that's why I don't want to get into these kind of, if this then what, if this then we would see. I mean, for all you know, अगर यहाँ पे इग्नोर कॉर्पोरेट टैक्सेशन नहीं होता ना, हम तो यही बोलते भैया ये प्रॉब्लम छोड़ देना एग्जाम में। कहां ये कैलकुलेट करोगे टैक्स? अच्छा, जो खाली ग्रुप 1 दे रहा है उसको तो टैक्स के बारे में हवा भी नहीं रहेगा,
राइट। अब प्रॉब्लम ये आएगा, चलो सी द थिंग्स दैट आर पॉसिबल। अब ये आएगा सर इसमें ये तो कॉर्पोरेट है, मैट लगेगा, राइट। तो फिर मैट का प्रोविजन, अच्छा चलो मैट नहीं लगा तो सर ब्लॉक ऑफ एसेट लगेगा, कुछ तो लगेगा, राइट। सो calculate project IRR, equity IRR, ignore corporate taxation, explain the difference in project IRR and equity IRR। अच्छा, पहले ये लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं, प्रोजेक्ट आईआरआर और इक्विटी आईआरआर में क्या फर्क है। अच्छा, हाउ डू यू कैलकुलेट आईआरआर, एकदम बेसिक्स में। हाँ हाँ, इंटरपोलेशन, बट वेर एनपीवी इज जीरो। ओके, यहाँ पे एनपीवी कितना है, आप लोग हमेशा एनपीवी इक्वल टू जीरो, एनपीवी इक्वल टू जीरो करते हो। Also learn this definition, no, where the present value of the cash outflow is equal to the initial outlay, तब जाके एनपीवी जीरो होगा ना, where the PV of cash inflows is equal to the initial cash outlay, right। now initial cash outlay तो दिया है यहाँ पे 200 करोड़, right। PV of inflows निकाल लेंगे, है ना, ये 50 करोड़ है और फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, right। तो अपने पास that is the annual cash flows into PVA factor will give the present value of cash flows, that must be equal to 200 crores। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आईआरआर, ये क्या आईआरआर है, प्रोजेक्ट आईआरआर है कि इक्विटी आईआरआर है, प्रोजेक्ट आईआरआर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट आईआरआर एंड इक्विटी आईआरआर। देखो प्रोजेक्ट आईआरआर में ना, यू कंसिडर्ड, वुड यू कंसिडर डेट आल्सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रोजेक्ट आईआरआर। एक मिनट, व्हेन यू एंड इक्विटी आईआरआर, equity IRR, again, like the definition says, the present value of cash inflows available to equity shareholders is equal to the present value of cash outflow of equity shareholders. Project IRR is for the entire project, equity IRR shall include the debt portion. Yes, Shrija, that's what I'm saying. Present value of cash flows to equity shareholders, debt हटाने के बाद जो बचता है, right? That must be equal to the cash outlay by the equity shareholders, 50 crores। ओके, वो जो भी आईआरआर होगा दैट विल बी द इक्विटी आईआरआर। एनीवे विल कम टू दैट लेटर। पहले आप मेरे को ये प्रोजेक्ट, चलो ना, अभी आप लोग सब बोल रहे थे ना सर ये तो इंटर का ही चैप्टर है, तो मेरे को प्रोजेक्ट आईआरआर कैलकुलेट करके बताना, तो सिंस मैं इंटर नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं आता है ये, प्रोजेक्ट आईआरआर निकाल के बताओ तो।
पर मनन वो तो सेकंड वाले में आएगा ना यार. Manan, your query is relevant for equity IRR, not for project IRR. Sir, project IRR will also consist of debt, right? Why not in Oh, this? project IRR is ये प्रोजेक्ट कितना जनरेट करेगा टू प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल. So to compute the cash flow, we have to subtract the interest, right? एक मिनट. कंप्यूट द कैश फ्लोज, बट टू कैलकुलेट व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग द प्रोजेक्ट IRR. मैं अगर डेट वाला हूं, राइट, मैं क्यों प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट रखूंगा. मैं तो यही रखूंगा ना कि बॉस मेरे लिए कंपनी कितना जनरेट करके दे देगी. टू कवर माई कॉस्ट, हाउ मच इज द प्रोजेक्ट गोइंग टू जनरेट. See, if you are a debt holder, are you interested on how much is the residue profit after covering your interest, or are you concerned with how much is the company earning before covering my interest? Before the interest, like my interest coverage would be. हाँ, now understand. अब तक आप जो IRR कैलकुलेट करते हो, that was the IRR of the cash flows. No one told you project IRR निकाल के बताओ. आप समझ रहे हो? Are you understanding the subtle question as to what you have been served till now? हमेशा कैश फ्लोज दिया है, बोलता है ये कैश फ्लोज का IRR निकाल के बताओ. तो आप बोलते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. बट द मोमेंट आई टेल यू प्रोजेक्ट IRR, ये प्रोजेक्ट कितना जनरेट कर रहा है, तो you will see how much is the project generating to the providers of the capital. No, providers of capital. Capital मतलब debt and equity both. और Yes, sir. इक्विटी वाला ये देखेगा कि भैया डेट को देने के बाद मेरे को कवर करने के लिए कितना IRR निकलता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल IRR, प्रोजेक्ट IRR, इक्विटी IRR. अंडरस्टूड मनन? Yes, sir. 'Toll revenue 50 crores and toll expenses 5% of 200 crores. 10 crores, 40 crores. Since वो तो दिया ही हुआ है, टैक्सेशन इग्नोर्ड है. अच्छा, अगर आपको बाद में याद रखना है, सिंस टैक्स इज इग्नोर्ड, इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको भी कर. ओके, अभी IRR $17.68 ऐसा. कैश फ्लो 1 15 साल एंटर
17.68 enter compute 5.16 into 40 206 और कम और बढ़ा सकते हो शिक्षक हाँ हाँ see that again is you are calculating project IRR right project IRR मतलब क्या है where the providers of capital even the debt holder he's seeing was how much is the project earning to cover me right तो उसमें से आप लोन का निकालोगे तो फिर कैसे चलेगा वो तो यही देख रहा है कि बॉस मेरे को कवर करने के लिए सी इट इज लाइक दिस इफ आई वांट टू सी वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग इनफ टू कवर माय सैलरी so I'm not going to see how much is the organization earning after my salary. I'm going to see before my salary is paid, is the company earning sufficient? Right? So that means when you're calculating the project IRR, right? Where you are looking at the entire project, equity and shareholders, right? So then you are not going to consider the debt repayment or interest service cost. You are going to see before all this. कौन सा रिमोट एसी का रिमोट इधर नहीं so before even covering hours how much is the organization earning so you're not going to consider the loan repayment and because the loan repayments and all have to come out of this right four decimal places that is why even in four decimal places I'm getting 20 मेरे को थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ रहा है I'm getting 206.53 in my calci कल्पना ये क्या है 103.586 13.586 नहीं देखो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम यहाँ डाउट पूछते समय तो ऐसे सब पूछ लेते हैं सर ये हुआ तो क्या वो हुआ तो क्या है और यहाँ बेसिक आईआरआर कैलकुलेशन में हवा टाइट हो रही है नो कल्पना 13.586 फिर 18.586 yeah that is quite okay 18.586 एक मिनट रुको मैं देख लेता हूँ 80 आई मीन ठीक है हमको एग्जैक्ट नहीं चाहिए वैसे भी इंटरपोलेशन एग्जैक्ट नहीं देगा 4.96 into 40 हाँ बिल्कुल 198.53 ऐसा कुछ है ये फिर भी चलता है बिकॉज आपका और वो टारगेट 200 में खाली 1 point something का difference है whereas what Preksha gave me there is a difference of almost 10 coming 10 या कितना तो आ रहा था I mean check at at 18% that is 40 crores into PVAF 18% 15 years minus 200 must be equal to 0 or this must be equal to 200 whatever NPV ये 5.0916 minus 200 ये तो इसको निकाल
40 into 5.0916 minus 200, 3.64. 664 at 19%, 40 crores મને ટેબલ આપો ને. into PVF by PVF 19%, 15 years. So NPV 19 enter compute 4.875859, 40 crores into 4.8759 minus 200. 40 into 4.8759 minus 200. 4.964. और ये नेगेटिव है. ठीक है, तो 18% पे 3.664 है और 19% पे minus 4.96 है, 964 है. So 1% का difference, this will be 3.664 plus 4.964, 8.628. और अपने को डिफरेंस कितने का चाहिए? से 3.664 का चाहिए ना, ये जीरो आने के लिए. 3.664 into 1 divided by 8.628, 0.4246. Therefore, IRR is 18.4246. तो इतना आपका भी चलेगा. आपने मेरे ख्याल से थोड़ा वाइड रेंज लिया होगा. क्या रेट्स लिए कल्पना? You took which two rates? 15 and 20 ना? हाँ बोला ना आपने थोड़ा. हाँ 15 and 20 ठीक है, चलेगा. तो आप लोग को थोड़ा हल्का सा वेरिएशन आएगा मेरे से, दैट्स ओके. इंटरपोलेशन में दैट्स एक्सपेक्टेड. ठीक है. एनीवन वांट्स मी टू स्क्रॉल अप डाउन? कुछ अभी बताओ. हाँ ये रहा. यू वांट IRR? एक मिनट, ये वाला या मन चलता है. अच्छा बाय द वे, पीवीएफ टेबल से आपको मालूम है ये रफली स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लेने का है? I mean, if I were to give you a PVAF table, right, would you know from where to start, from which rate to start approximately? Because see, technically, you can also start by taking 2% and 40%. बराबर है? But to get the most accurate answer, do you know how to calculate it from the PVAF table? The starting point? No? यहाँ पे टोटल आउटले आपका कितना है? 200. और एनुअल कैश आउटफ्लो 40. Right? Now 200 by 40 gives you a PVF factor of roughly 5. है ना? 5. Now wait, I think मेरे पास होना चाहिए कहीं तो. एक मिनट रुको.
I don't know where it is, but it must be there somewhere. Not here. Not here. Okay. Now, अपना time period is 15, right? 15. Huh? Now, इसमें just see where 5 is coming. 5.32, 5.09, 4.87. 5 would be somewhere here, right? Now, this 5.909 and 18 and 19 there. I mean, that's how we get a rough, फिर भी approximity करेंगे, but at least I know a decent starting point, because the wider the gap is, the more your rates are going to vary from the action, right? Online, understood? You just divide the initial cash outflow by the, because remember, cash flow into PVAF 40 into PVAF must be equal to 200. तो हमने क्या किया, 200 को डिवाइड बाय 40 किया, 5 आया. अब हम पीवीएफ टेबल में जस्ट ढूंढते हैं 5 किधर आ रहा है भैया 15 साल में. फिर रिवर्स प्रोसेस. एक मिनट आंचल, क्या चाहिए? एनपीवी किधर चाहिए आपको? कौन सा एनपीवी यार? मैंने तो एनपीवी कैलकुलेट भी नहीं किया. इंटरपोलेशन आपको मेरे से चाहिए, इंटरपोलेशन तो मुझे आपसे चाहिए. आप लोग इंटर में किए हो, मैं तो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं कम से कम, नहीं तो लास्ट ये टॉपिक मैंने कब किया होगा मालूम है? व्हेन आई पास माय सी, वो भी इंटर है. दैट्स आई थिंक 87, 40 साल हो गए हैं, और आप लोग मेरे से ले रहे हो ये. चलो, okay. Now, equity IRR. See, this was your project IRR, right? पहले तो इक्विटी आईआरआर का एक नोट लिख लो बस, ये क्या है. As against project IRR, as against project IRR, the equity IRR, takes into account, the equity IRR takes into account the impact of debt financing. Full stop. Next sentence. That is why it is also referred to as levered IRR. Levered IRR. Full stop. For calculating equity IRR, we need to calculate the cash flows available to equity shareholders. The cash flow available to equity shareholders. Equity IRR is that rate
equity IRR is that rate which equates the present value of equity IRR is that rate which equates the present value of cash flows to equity shareholders to the initial outlay of equity shareholders. Sure. Last two lines. Kshitij, I presume that KAR के बाद वो 0 O missing है. हाँ, क्षितिज. हाँ. एक मिनट, लास्ट टू लाइंस. सी यार, मैं तो एक्सटेम्पोर बोलता हूँ कि लास्ट टू लाइंस ऐसे तुम लोग सडनली पूछोगे. लास्ट टू लाइंस क्या है? Equity IRR is that rate which equates the present value of, what was it? Cash inflows or cash flows. Cash flows to equity shareholders to the initial outflow of equity shareholders. Okay, initial outlay of equity shareholders. चलो, अभी इक्विटी आईआरआर कैसे कैलकुलेट करें? Cash flow from project 40 crores less. Now see, they are saying that ये जो 15 साल का लोन होगा ना, it will be, the financial institutions are agreeable for repayment of loan in 15 equated annual installments. Right? Huh? Less equated annual installment of loan of debt. Debt is 150 crores. 15%. नहीं, कितना परसेंट था? 15% and 15 years. कितना आ रहा है? 25.65. लाइक हायर परचेस. हाँ, पर हायर परचेस जैसा वो टेबल वेबल मत बनाने पड़ी हमें. So that means this would be cash flows
cash flows to equity shareholders is 14.35. ठीक है, अभी therefore equity IRR बताओ, equity IRR क्या है? ये कितना 50 ना, so 50 divided by 14.35, 3.48, राइट? तो 15 साल का 3.48 ये इधर आ रहा है 28%, 28 और 29 के बीच में रहेगा। Cash outflow will be 50 crores. Absolutely. See this. IRR at क्या लिया आप लोगों ने, क्या लिया? चलो आप लोग के बेसिस पे ही जाते हैं, आप लोगों ने क्या लिया? $14.35 into PVAF. Now I don't know what rate you have taken. This into 15 years minus 50 crores. माना, ये रहा तेरा जवाब।
28.46 से प्रेक्षक प्रेक्षक क्या रेट लिया आपने? 2। ठीक है, आपका आंसर इज क्वाइट ओके, बट विच रेट्स डिड यू कंसिडर? Chinmay 28.17. Preksha is considered 20 and 30. And Chinmay, तूने क्या कंसिडर किया? 25 and 30. Jay 28.46. How to know from where to start without the help of table? There is no प्रिया, देयर इज नो रूल, इसका कोई है नहीं कि कहां से आप शुरू कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ टेबल, बस आपको कहीं से शुरू करना है। राइट, कौन सा? अगर मांगा तो मिलेगा। यस, वी कैन जस्ट गेस। If we take 50 crores, we have not factored in the debt portion of the cost because it is directly factored in the cash flow attributable. मतलब समझा नहीं इससे क्या? अगर आप 50 करोड़ ले रहे हो, वो तो कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट टोल हुआ ना। It is estimated that the toll revenue will be 50 crores. टोल से 50 आएगा, तो उसमें तो इंटरेस्ट आपने लिया ही नहीं अभी तक। Usually they do give table in the exam. देखो Dylan, यही चीज, yes sir, and other costs are factored in 14.35. And the annual toll collection expenses, including maintenance, is 5%. So इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना? देखो डिलन, ऐसा है कि इंस्टीट्यूट पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हो, वो कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। कभी वो टेबल दे देंगे, कभी क्वेश्चन में वैल्यूज देंगे, कभी दोनों नहीं देते हैं। सो व्हाट वी डू इज, इवन इफ यू रिमेंबर ब्लैक-शोल्स जब मैं कराया था, राइट, आई टोल्ड यू दैट पिछले 10 साल 7-8 साल से दे हैव बीन गिविंग द वैल्यूज इन द क्वेश्चन, राइट। बट हैविंग सेड दैट, आई हैव आल्सो टॉट यू हाउ टू, अगर वो टेबल पकड़ा देते हैं तो वो टेबल से कैसे निकालना है वो भी मैं सिखाया हूं, राइट। तो डिलन, यहां पे भी आई हैव टॉट यू हाउ, अगर वो टेबल दे देता है तो क्या करने का, नहीं दिए तो वैसे भी गेस वर्क ही है ना, 2 रेट लो। बट माई एडवाइस इज ये 10 का रेंज थोड़ा अवॉइड करो। एक मिनट, yes, so for 14.35 we have taken 40 crores, 50 minus 10 and 25.65। ये श्रीजा आपका क्वेरी क्या है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। पूछना चाह रहे हो कि ये जो इंटरेस्ट का कॉस्ट, मतलब जब भी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ एट्रीब्यूटेबल निकालते हैं, उनका आईआर हम निकालते हैं, तो हम उसमें सारे कॉस्ट जो भी उनके पहले होते हैं वो सारे माइनस कर देते हैं। तो मैं 14.35 जब हमने कंप्यूट किया तो हमने उसमें से 50 माइनस 10 भी कर दिया था, 25.65 भी कर दिया था। तो 50 करोड़ जब हम इधर माइनस कर रहे हैं तो बाकी के जितने भी कॉस्ट है हमने पहले ही उनका 14.35 में फैक्टर कर लिया है। हाँ, मतलब सी आई कुड हैव, नहीं वैसा, आई कुड हैव रीरिटन दिस अगेन हियर, नो,
कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट 50 लेस एक्सपेंसेस 10 लेस इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट 25.65। तो मैंने यहां चालू ही किया 40 से, तो बाकी सारा एक्सपेंस आ चुका है, अभी खाली इंटरेस्ट निकाल के कर दिया। सो मतलब 50 करोड़ का 14.35 का मतलब बेसिकली ये है कि 14.35 कितने टाइम्स होगा कि वो 50 करोड़ हो जाए, तो सारे कॉस्ट और सारे स्टेक होल्डर्स के एक्सपेंसेस मीट हो जाए, ये इसीलिए वो जीरो हो रहा है। नहीं, इसीलिए वो जीरो हो रहा है, मतलब सी, जब आप इक्विटी आईआरआर कैलकुलेट कर रहे हो, राइट, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम एन इक्विटी शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव। तो आप ये देखोगे कि भैया व्हाट इज द रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माई कैश फ्लोस equates to the outlay made by me. Okay, got it. Outlay made by me is 50 crores, no? Yes. Okay. Yeah. This 50 crores is not toll revenue. That is 50 crores is not toll revenue. 50 crores, this is the initial outlay. और वैसे भी आईआरआर करते समय तो initial outlay. हाँ, Thank you. ओके, अच्छा, ये मैं ले रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव गॉट 28.17. या a whole lot of you have got 28.17. ठीक है, जिसका 28.46 आया है। सुनिधि, क्या रेट आपने कंसिडर किया? What range if not 10? I would typically recommend 5 का। बट एक मिनट प्रिया, what I'm telling you is my personal preference. There is no ऐसा कुछ right wrong नहीं है। 27 and 28, तो आपको 27.99 आ रहा है। हाँ, हाँ, तो सुनिधि को 27.99 आ रहा है, उनको भी वैसे ही आ रहा है। ठीक है, 49.99 at 28%। ओके, ठीक है, चलो। इट रियली डजंट मैटर, मैं सभी लिख देता हूं। 28.17 आया है, 28.46 आया है एंड 27.99 भी आया है ना, 27.99 भी आया। ओके, चलेगा, इट डजंट मैटर बिकॉज एनीवे आईआरआर इज एन अप्रोक्सीमेशन। नाउ इफ यू नोटिस समथिंग, प्रोजेक्ट आईआरआर कितना है? व्हाट वाज द प्रोजेक्ट आईआरआर? 18. और इक्विटी शेयर होल्डर का आईआरआर कितना आ रहा है? ये 28.17 है। Can you approximately try to reconcile these figures? ये प्रोजेक्ट आईआरआर 18% है और इक्विटी शेयर होल्डर का आईआरआर इतना आ रहा है, कैसे? हाँ, नहीं, capital gearing. Sahil, can you convert it into figures and explain? What we are discussing is not part of the solution in any case. ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही अपन एक्स्ट्रा वी आर ट्राइंग टू रिकंसाइल। एक मिनट, प्रोजेक्ट कितना कमा रहा है? 18। और डेट होल्डर्स को आप कितना पे कर रहे हो? है जी, एक मिनट, टके में 15%। दैट मीन्स on the debt you are earning 3 point something extra, huh? और वो 3 point something is being pocketed by the equity shareholders. How much is that 3 point something? आपका जो भी फिगर आया है बॉस, I mean, देखो, ये 18.426 था, जबकि आप डेट होल्डर्स को 15% दे रहे हो, तो
मैं जो लिखा हूं उसके बेसिस पे कर रहा हूं। 3.4246% आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो ऑन 150। On 150 you are earning extra. How much is that coming to? Huh? 5 point? चलो 14। और ये 5.14 कौन हजम कर रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर। दैट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर इज, ये जो 5.14, हाउ मच परसेंटेज डज दैट फॉर्म ऑफ 50 crores? Therefore this, ये 10% उसको एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है? राइट? नहीं, but Pratyush, this is not what I was asking. What I'm asking is ये 18 और 28 में क्या है? अच्छा, तुम नीचे से गए हो। नो नो, आई वाज आस्किंग द अदर वे अराउंड। ये 28 तो सी, तुम तो वो परसेंटेज एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ परसेंटेज में डिफरेंस आया ही क्यों? आई टेल यू, अदर्स को भी मैं बताता हूं। देखो प्रत्युष क्या बोल रहा है, सर 50 अपॉन 200 इंटू 28% इंटू 28। ये क्या किया? एक मिनट रुको, ये क्या किया तुमने? इंटू 28 क्या किया? एक मिनट प्रत्युष, ये क्या है? Sir, 50 is the equity share capital contributed by shareholders, and 28 अच्छा, is so okay, equity sorry. IR. So this is the proportion of equity. Right. पर उसको फिर इंटू 28 क्यों किया? उसको तो फिर टोटल रिटर्न से करना चाहिए था तेरे को। No, but equity IRR is earning 28%. Means the equity portion. हाँ, this is the equity IRR, right? So then why are you taking this proportion? ये तो इक्विटी का ही है, 100% इक्विटी का ही है। Okay. समझा। हाँ हाँ, you can't do this. ओके अच्छा चलो, सिंस हमने वो रिकंसिलिएशन, ये खाली सिर्फ आपके लिए नोट है, ये सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। the project is earning मैं इससे लिख रहा हूं 18.426% on 200 crores, that is कितना? अच्छा ठीक है, चलो एक क्या, what is paying the additional earning of 3.426% on
150 crores. That is 150 into 3.426%, 5.14. Additional return of yeah. This is your equity IR. So, but in that 18.426% that we had calculated, we had also considered equity shareholder का initial outlay of 50 crore. ठीक है. So that means that वो सिर्फ, so the earning that we've got of 18.426%, it is on book, Is what right? the It is on, entire project is earning on total. yeah. So But if you- now, हाँ. if we say that we're comparing 18% with 15%, it is not an apple to apple comparison, right? Because 15% तो we नहीं, only एक paying मिनट. to the प्रोजेक्ट इन टोटालिटी सबका पैसा मिला के कितना कमा रहा है 18.426%, और उसमें कॉस्ट ऑफ डेट आपका कितना है 15%. तो मतलब द प्रोजेक्ट इज अर्निंग 3% एक्स्ट्रा ऑन द डेट कंपोनेंट. But so that 3% could also be because of the equity shareholders का money Correct, that is there madam. in the But project. the equity shareholder say equity 100, debt 500, and the project is earning 18% on the entire capital. That means it is earning 18% on this and 18% on this. Yeah. हाँ, और इसको Yeah. आप 15 ही पे कर रहे हो. तो ये जो एक्स्ट्रा इस 500 करोड़ पे आपने कमाया है 3%, ये इक्विटी शेयर होल्डर लेके जा रहा है. हाँ, okay. क्या इतना दिमाग लगाते हो यार, उल्टा दिमाग लगाते हो आप लोग. This is so simple. 18% is on whole. That means on 100 I'm earning 18, on 500 I'm earning 18. अभी मैं आपका ही भाषा बोल रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं मैं. आई एम अर्निंग 18 ऑन अलग अलग और इनको मैं 15 दे रहा हूं, तो फिर इसका जो 3% एक्स्ट्रा है वो इधर जा रहा है. क्या नहीं? अच्छा, थिंक ऑफ दिस वे. चलो अभी मैं आपको, लेट्स से यू एंड मी बोथ इन्वेस्ट इन द बिजनेस. ठीक है, यू पुट इन 200, दिस इज यू, this is me. I put in 600. And on this whole 800, the business generates 20% profits. 160. Okay? But you are a debt holder and you are entitled to 8% interest. Now remember, that means 800 पे 20% जनरेट किया है, तो इसका मतलब 200 पे भी वो 20% जनरेट किया है, विच इज 40.
और 600 में भी वो 20% जनरेट किया है, विच इज 120, तब जाके 160 हुआ। लेकिन दिस इज व्हाट द कंपनी इज जनरेटिंग। मैं आपको तो 200 इंटू 8% ही देने वाला हूं, 16। दैट मीन्स आपके पैसे से बिजनेस ने 40 रुपया कमाया, लेकिन आपको तो 16 ही दे रहा है। तो मतलब ये जो 24 है, ये एक्स्ट्रा मेरे लिए बच जाता है। तो मेरा कमाई क्या होगा? ये 20% तो होगा ही होगा, प्लस ये जो 24 भी मैं अपना 600 रुपया का इन्वेस्टमेंट में कमा लिया ना, 24%। क्या आया समझ में? Yes, sir. So Hmm. I was confused कि that debt and equity will earn proportionate ऐसा fixed होता है क्या? Like ऐसे कैसे? आपका पैसा और मेरा पैसा धंधे में घुस गया और वो धंधा 25% कमाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपके पैसे में कम कमाएगा और मेरे पैसे में ज्यादा कमाएगा। हाँ, understood. Right. हाँ। अच्छा, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम विच वी विल डू, लाइक आई सेड लास्ट में। वो ऑप्शंस का चक्कर इसमें आता है, ठीक है। सो जय एंड प्रिया, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 150? गणेश, कौन सा 150? किधर 150? तो वो 3.426 का परसेंट लिया ना, ओनली 150 शेयर। हाँ भाई, तू एक्स्ट्रा जो है वो डेट पे ही कमा रहा है ना। ओके ओके। The project is earning 18.426 on the whole, right? Debt is 150 crores. तो डेट पे तुम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स लेके चले जाएंगे? You are Yeah, sir, earning got 18.426 on 150, and on this you are paying 15% on 150, no? So this difference is going to be pocketed by the shareholders, no? it. Thank you. So this 42 will keep it pending, and I think two people, Jay and I think Priya, है ना, आप लोग को बाकी सम करेंगे, फिर ये लास्ट में करेंगे। ये आप लोग ऑप्शंस होने के बाद कर लेना, right? अगर मैं ही आपका ऑप्शंस पढ़ाऊंगा तो आई विल डू इट, और आई विल इन्फॉर्म द अदर प्रोफेसर ऑल्सो। एनीवे, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड। सो 42 अभी पेंडिंग रखते हैं। 43, the note which you made is that itself was the second part of the question to explain the difference of the project IRR. Yes, डिफरेंस मांगा था ना क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट IRR एंड इक्विटी IRR, तो उसी के लिए तो नोट दिया मैंने। चलो 43, DEF has been regularly paying a dividend of 19,20,000 per annum for several years, and it is expected that the same dividend would continue at this level in the near future. There are 12 lakh equity shares of 10 each, and the share is traded at par। 1 minute, total dividend कितना है? 19,20,000, and number of shares, therefore DPS कितना है? 1 point, अच्छा ये भी दिया है कि शेयर इज ट्रेडेड एट पार। The company has an opportunity to invest
8 lakhs in 1 year's time, as well as further 8 lakh in 2 years' time. So, एक मिनट, कंपनी यहां खड़ा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, यहां पे वो 8 लाख इन्वेस्ट कर सकता है और फर्दर 8 लाख इधर इन्वेस्ट कर सकता है. ये इसका इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है. As it is estimated that the project will generate 3,60,000 per annum in 3 years' time, which will continue forever. Oh, तो ये जो डायग्राम है ना, इसको थोड़ा यहां लाता हूं. और ये कंपनी बोलता है यहां से राइट, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, बराबर है. हाँ? This investment is possible if dividend is reduced for the next 2 years. Whether the company should accept the project. Also analyze the effect of market price of the share if the company decides to accept the project. चलो, ये तो बात की बात है. Should the company accept the project? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे इवेल्युएट करोगे? क्या चीज मिसिंग है और वो कहां से निकल सकता है? हाँ, कौन सा रेट पे डिस्काउंट करेगा वो मिसिंग है. बेसिकली केई इज मिसिंग. केई निकल सकता है क्या कहीं से? What is the simplest form of valuing equity? P upon K. This is the market price, no? डिविडेंड पर शेयर आपके पास है, मार्केट प्राइस है, केई निकल जाएगा. केई निकलने के बाद प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर दो. Which means now you notice something. Do not study each chapter in watertight compartments. ये चैप्टर कर लिया बस, ये इसका इतना ही रोल है. उसको वो लोग कहीं पे भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग नहीं दिए. They might say that 10% bond is trading at a yield of 6%, right? And the company expects a 2% premium for the projects. रिस्क फ्री रेट निकालना पड़ेगा. अच्छा, ये तो आप बोलोगे सर ये तो इजी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एट अ यील्ड ऑफ 6%, 2% प्रीमियम, 8%. सपोज यही क्वेश्चन घुमा दिया. 10-year government security is traded at a price of 98.69. 10% 10-year government bond is trading at a price of 98.69 and the company expects a 2% premium. Bond के chapter में you will now have to recollect how do you calculate the yield when the price was given. याद है कूपन प्लस माइनस प्रोरेटेड गेम्स, वो लगा के आपको रिस्क फ्री रेट निकालना पड़ सकता है. अच्छा, फॉरगेट अबाउट दिस. दे कुड हाइपोथेटिकली दे कुड आल्सो गिव यू ये पूरा सम दिया. यहां पे तो दे यूज्ड इक्विटी शेयर, नो. दे कुड जस्ट से दैट अ कंपनी शेयर फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट 180, द स्पॉट प्राइस is 170 and it's a 3-month future. अब आप सोचोगे यार ये सम में फ्यूचर का क्या रेलेवेंट है, बट रिमेंबर फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट इनटू 1+r है. ये r निकलेगा इधर से. And then you use. So please do not keep every chapter in अलग अलग compartment. Right now, okay, now here to evaluate the cash flows, we need the discounting rates, $16%.
Finally, Gordon. आज तो लगता है सब मेरे को डेविएट करने पे तुला है। वो कोई तो बोला सर स्क्रॉल करना है, कृणाल तो स्क्रॉल अप। वट एवर हैपन टू द वर्ड प्लीज, राग कर दो। चलो डन। ओके चलो एनपीवी कैलकुलेट करके बताओ कितना। हाउ हाँ तो कैसे क्या किया। रिमेम्बर ये यहां से परपेचुइटी में जा रहा है, तो इसका परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू विल बी हियर। हाँ तो कैश फ्लो 1 8 lakhs, कैश फ्लो 2 8 lakhs, और ये सेकेंड ईयर ही होगा। इसका वैल्यू होगा 360 अपॉन 16 पर सॉरी हाँ 16%। 18 लाख सॉरी कितना हुआ 3,60,000 डिवाइडेड बाय 0.16 22,50,000 नो। Point 8621 and this will be 1 divided by 1.16 whole square 1 divided by 0.7432 0.7432 और ये भी 0.7432 डिस्काउंटेड कैश फ्लो बताओ। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो। अरे क्या ऊपर क्या स्क्रॉल होता है। 38,7960 सुनिधि और ऊपर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 2250। कौन पूछा। मानव। मानव तुम लोग का तो इंटर में था ना कैपिटल बजट। हाँ अच्छा जय डिडंट गेट द थर्ड ईयर कैश फ्लो। अच्छा हुआ तुम लोग अभी क्लास में नहीं बैठे, क्लास ले लेता यहाँ पे अभी है।
एक मिनट मानो 2250 परपेचुअलिटी कैश फ्लो कैसे वैल्यू करते हो? हाउ डू यू वैल्यू परपेचुअल कैश फ्लो? Cash flow at the end of year one, I think कैश फ्लो एट द एंड ऑफ year one from where we are checking the perpetual cash flows. नहीं 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 नहीं, ये 3,60,000 कब से हो रहा है भैया? End of year three. एंड ऑफ ईयर 3 ना, तो मतलब ये देखो, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, यहां से ये परपेचुइटी में जा रहा है। Yes, sir. तो ये जो परपेचुअल कैश फ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा अच्छा, okay, understood. वो तो यहां पे आएगा ना। Yes, ये पूरा का प्रेजेंट वैल्यू करोगे, दैट विल गिव यू द वैल्यू ईयर, सेकेंड ईयर के एंड पे। yes, sir. Understood. हाँ Whenever we are setting the perpetual cash flows, I'm considering that it will come back to 1 year prior. For example, हाँ, if it 1 was year in prior। year one, if we divide it by key, it would be at the एक end मिनट of रुको year. रुको, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ठीक है, अगर आपका मान लो 10-10 रुपया से 10 रुपया नहीं लेते, 50 रुपया, चलो 50-50 रुपया यहां से परपेचुइटी में जाता है, तो आप क्या करोगे? इस 50 डिवाइडेड बाई 16, आई एम प्रेज्यूमिंग r इक्वल्स टू 16, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई 16, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दीज परपेचुअल कैश फ्लोज At zero. हियर। ठीक है, अब अगर ईयर 2 से कैश फ्लो परपेचुइटी में जा रहा है, ठीक है, Yes, we do not one. तो हाँ, 50 डिवाइडेड बाई 16 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ परपेचुइटी हियर। लेकिन अपन तो कैलकुलेट कर रहे हैं एनपीवी इधर, Then again discount for 1 year. राइट? तो ये सम में क्या था? 3 onwards perpetual. हाँ, यहां से 360 जा रहा है, ठीक है, तो इसका हम 360 डिवाइडेड बाई 16 किए, तो हमको इसका परपेचुइटी वैल्यू मिला इधर। इसको फिर 2 साल डिस्काउंट करना पड़ेगा ना, विच इज व्हाट सीरियस। Yes, yes. Thank you. ओके, ये सब इंटर में, हाँ, मानव क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. हाँ, Thank जाके you. इंटर का फीस पैसा वापस कर, वापस मांग, जेके शाह से पैसा वापस मांग। बोला सर ये सब तो इंटर में करा ही नहीं था। हैं? चल, अच्छा, अभी ये एनपीवी, सॉरी, ये एन कितना आया डिस्काउंटेड कैश फ्लो? 387। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज द एनपीवी ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। एनपीवी, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स ये पूरा प्रोजेक्ट आप बिठाओगे, उसमें से जो बेनिफिट होगा उसका एनपीवी 7960। Now, this benefit will translate into how much benefit per share. This benefit मैं लिखूंगा, how much benefit per share कितना हो जाएगा? 0.32, 0.33. That means technically the market price of the share should increase from 10 to 10.33, क्योंकि अभी नया प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लो है वो आएगा, राइट? सो दैट मीन्स ये लास्ट में लिखना, सिंस द एनपीवी is positive, the value of the firm
will increase by 38, 79, 60. per share. पूछा है ना, also analyze the effect of market price of the share. SB कैलकुलेशन मतलब ना, SB मतलब समझा नहीं। ये सारे कैलकुलेशन, अरे कल्पना, हाउ कैन इट नॉट क्लिक यू? देखो, जब भी आपको कैश फ्लो देके प्रोजेक्ट इवेल्युएट करने को देता है, राइट, तो डिस्काउंटिंग ही करना है, और तो कोई मेथड है नहीं। There's only discounting you have to do when you are seeing whether to accept. I mean, look at it this way. आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, आपको इनिशियल कैश आउटले दिया है, उसके बाद बोलता है परपेचुइटी में जाएगा और बोलता है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मतलब डिस्काउंटिंग ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और अगर डिस्काउंटिंग है तो आपको रेट ढूंढना है कहीं से, डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। अब यही चीज मैं बोला कि दिमाग के ऑप्शंस खुला रखो। और मैंने एसएफएम के पहले लेक्चर में क्या बोला, पूरा एसएफएम किस चीज का खेल है? आर। और हर चैप्टर में हम आर यूज करते हैं, तो इसका मतलब हर चैप्टर में बाकी सारा डेटा दिया है तो आर खोजा जा सकता है, एवरी चैप्टर विदाउट एक्सेप्शन। सो नाउ यू हैव टू सी कि वो डेटा किस चैप्टर का दिया है जहां से आर निकल सकता है। यहां पे दे हैड गिवन द डेटा ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस, सो वहां से आपका आर निकल सकता है, एंड देन यू डिस्काउंटेड। नाउ अनलेस यू से सर परपेचुइटी का स्ट्राइक नहीं किया, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, स्पेशली सीए फाइनल के एसएफएम में वो घोड़े की तरह सब मत करना, इधर उधर देखने का नहीं, बस डिस्काउंटिंग है तो डिस्काउंटिंग ही करते हैं, वैसा मत करना, बहुत मुश्किल होगा। Are we going to compare the increased market price against the dividend foregone and then decide why? What is the objective? So there's a line in the question which says that the investment is possible if हाँ, तो ये जो dividend is 8 लाख का जो उसने reduced in next आउटले 2 ले रहा years. है, ये 8 लाख का जो आउटले ले रहा है वो डिविडेंड से ही आया होगा। डिविडेंड इज रेड्यूस, तो वो तो ऑलरेडी वो फैक्टर कर ही रहा है कि मैं डिविडेंड रिड्यूस करूंगा। इनफैक्ट हमने कॉर्पोरेट वैल्यू नहीं, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी में I think we have done sums where, you know, for the next 3 years, the company is planning to reduce the dividend to 2 rupees. वैसे sums हमने किया है उधर, पर इधर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, इधर तो खाली आपको प्रोजेक्ट इवेल्युएट करना है, that's all. Okay, now 44 is again risk neutral model, binomial, ये छोड़ो अभी। 45, the present value of the new proposal 150 crores, PV will increase by 30%, PV will increase by 40%. This is also risk neutral. 46. अच्छा 46, 5 minutes and then we'll start. अरे मैं I have, देखो ये लोग यहाँ पे, ये लोग लिखना भी चालू कर दिया, मैंने तो देखा भी नहीं था। 2 मिनट ब्रेक, हाँ हाँ ठीक है, 2 मिनट चल।
Sorry, thank you. ये सब याद है मान. On traffic, highway X is 10,000 and 8,000 vehicles on highway Y. 70% of the vehicles are private and the rest are commercial. एक मिनट रुको, ये पहले ना इतना सारा डेटा जब दिया रहता है, ये X Y, आप लोग अभी इसको लिखो मत. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट ट्रैफिक 10,000 and 8,000. एक मिनट, इसका 10,000 है, इसका 8,000 है, और इसमें 70% of the vehicle are private and rest are commercial. Private vehicle, commercial vehicle, 7,000, 3,000. Private vehicle, 5,600, 2,400 commercial vehicle. Okay. Average loss of time due to delay is 1.3 minutes in highway X and 1.2 minute in highway Y. एक मिनट. Delay time कितना है? 1.3 minutes, 1.2 minutes, 1.3 minutes. हाँ? The flow of traffic across and between aforesaid is controlled by traffic lights. Due to heavy flow, 50% of the traffic on each of the highways is delayed. एक मिनट. 50% is delayed. मतलब delay is for 3,500 vehicles, 1,500 vehicles, 2,800, 1,200, और इसका delayed time 1.3, 1.2. Okay, ठीक है. The cost of time delayed is estimated to be 80 per hour for commercial vehicle and 30 per hour for private vehicle. 30 rupees delay cost. 30 for private and 80 for commercial. ठीक है. The cost of stop and start is estimated to be 1.2 for commercial, 0.8 for private. Start stop cost. कितना है? 1.2 for commercial and 0.8 for private. 0.8 for private and 1.2 for commercial. Okay. The cost of operating the traffic light is 80,000 a year. One policeman is required to be posted for 3 hours a day at a crossing, which costs 150 per hour. Due to failure to obey traffic lights, 8 fatal accidents and 60 non-fatal accidents occurred in the last 4 years. On an average, insurance settlements per fatal and non-fatal accidents are 5 lakh and 15,000. To eliminate the delay of traffic and the accident caused due to traffic light violations, the flyover has been designed. It will add a quarter of kilometer to the distance of 20% of the total traffic. Total traffic का 20% का increase होगा quarter kilometer. No posting of policemen will be required at the flyover. The flyover will require an investment of 3 crores. Extra maintenance costs would be 70,000 a year. And the incremental operating cost for commercial vehicle will be 5 per kilometer and 2 for non-commercial vehicle. Expected economic life of the flyover is 30 years, having no salvage value. The cost of capital of the project is 8%. Corresponding capital recovery rate is 0.08888. You are required to calculate the total net benefit to the users, annual cost to the state. See, when you say total net benefit to the users, basically you are saying society, right? And annual cost to the state and benefit cost ratio.
How will you go about it? कैसे करोगे? बेनिफिट टू यूजर्स मिल जाएगा. ओके. ओके. ऑनलाइन एक मिनट रुक जा. ऑनलाइन वाले से भी पूछते हैं, सब ऐसे ही घर पे हाफ पैंट पहन के बैठे हुए हैं, कैमरा ऑफ करके. बोल बोल बोल, कैसे करोगे? Any inputs? How you will approach the problem? Basically, you are going to यही करना है, बेनिफिट्स वर्सेस कॉस्ट. ओके. सो ये ऑनलाइन वाले बाकी सब चीज में रिकॉर्डिंग ऑफ है, ये सब बोलेंगे. अभी मैं मांगता हूं तो कोई बोलता नहीं है. इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेनिफिट्स, इंक्रीमेंटल नहीं, कॉस्ट बेनिफिट्स. इंक्रीमेंटल तो तब होगा ना जब आपका पुराना कुछ कॉस्ट या बेनिफिट था. वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स टू यूजर्स. क्या क्या है? बहुत सारी चीजें है ना. ये शुरू से लेते हैं. ये average loss of time due to delay is 1.3 minutes on highway X and 1.2 minutes on highway Y, right? So A, annual savings on delays. तो यहां पे हाईवे एक्स एंड हाईवे वाई. ठीक है. तो हाईवे एक्स में क्या होगा? चलो आप लोग भी साथ साथ करते ही जाओ. ये प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन बहुत लंबा है. हाँ, दिस वन ले लो. हाँ, ये वाला स्टार्ट स्टॉप डिले कॉस्ट.
हो गया? चलो अभी चालू करते हैं। अच्छा, अभी कॉस्ट ऑफ डिले, सी कॉस्ट ऑफ डिले इज सेपरेट फॉर प्राइवेट एंड सेपरेट फॉर कमर्शियल, अलग अलग कॉस्ट है, राइट? और ये लोग डिले में क्या बोल रहे हैं कि ड्यू टू हेवी फ्लो 50% ऑफ द ट्रैफिक ऑन ईच ऑफ द हाईवे इज डिले, राइट? सो दैट मीन्स सी इसमें प्राइवेट होंगे, एक काम करते हैं इसको ना, ये पूरा सब प्राइवेट व्हीकल्स होंगे, कमर्शियल व्हीकल्स होंगे। प्राइवेट व्हीकल्स कितने होंगे? आप लोग के पास वो टेबल रेडी होगा ना, मेरे को ऊपर नीचे 10,000 का 70%, लेकिन उसका 50% ही डिले हो रहा है ना? और इस डिले का कॉस्ट कितना है? 30 पर आवर। और कितना मिनट से डिले हो रहा है? 1.3। और ये डिले पर डे है। कितना है बताना? 830 375। ओके। कमर्शियल व्हीकल 10,000 का 0.3, उसका 50%, और उसमें कॉस्ट ऑफ डिले है 80/60 इंटू, सॉरी, हाँ 80/60 इंटू 1.3, डिले टाइम तो उतना ही है, इंटू 365, 9,49,000। तो इसका टोटल 17,75,375। अब हाईवे वाई में क्या स्टोरी है? 8,000 का 70%, प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, 8,000 का 70%, उसका 50%, और इधर कॉस्ट ऑफ डिले वही है 30/80, और 1.2 है, 30/60 इंटू 1.2 इंटू 365। And this will be 8,000 into 0.3 into 50% into 80/60 into 1.2 into 365। प्राइवेट व्हीकल का कितना आ रहा है? कितना है प्राइवेट व्हीकल का? 6 लाख, 6,13,200। और कमर्शियल व्हीकल का 7,08,000। एक मिनट, ये क्या बोल रहा है ऋषिकेश? क्या बोल रहा है तू? 80/60 इंटू 30 रुपीज पर आवर है, और एक
एंड 1.2 मिनट है ना, सो पर डे उसका उतना लॉस है. 60 in this is 60 minutes, yes. 30 per hour है. चलो ये टोटल हो गया 13,14,000 और इसका टोटल हो गया एनुअल सेविंग्स on cost of delays. How much? B. Annual savings on starts and stops. Highway X, highway Y. Private vehicle, commercial vehicle. चल स्क्रॉल करो. ये आंचल लगती है मेरे को, प्लीज डोंट स्क्रॉल बोल के वो वॉकिंग पे चली गई है. हो गया. हाँ अच्छा, ये प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल. ठीक है. अभी स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स का क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ स्टॉप एंड स्टार्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 1.2 फॉर कमर्शियल, 0.8 फॉर प्राइवेट व्हीकल. ओके, सो यहां पे 10,000 का 0.7, ठीक है. 50% ऑफ द ट्रैफिक इज डिलेड, तो ये स्टार्ट स्टॉप 50% का ही होगा इंटू 0.5. और डिले का कॉस्ट कितना है? 0.8 इंटू 365. हाँ, 0.8. The cost of stop and is estimated to be 1.2 for commercial and 0.8. It is just the cost of stop. तो ये तो पर ईयर तो हो नहीं सकता है, राइट? और पर मिनट का तो कुछ दिया नहीं है, तो ये ऑब्वियसली पर डे का ही द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप. हाँ, कॉस्ट ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप.
नहीं बट देखो पर आवर वगैरह जो है वो सब दिया हुआ है इन लोगों ने 80 per hour 50 150 per hour so this we can only presume is per day और पर आवर देने से भी फिर कितना आवर्स हाँ तो पर व्हीकल ही तो है ये $10,000 into 0.3 into 0.5 into 1 point यार क्या दिखा था 1.2 into 365 and इधर होगा 8,000 into 0.7 into 0.5 into 0.8 into 365 and this will be 8,000 into 0.3 into 0.5 कितना आता है सॉरी ये 1.2 आएगा हाँ why is 50% because शिवानी only 50% is delayed और स्टार्ट स्टॉप तो डिले में ही होगा जो गाड़ी स्मूथली जा रही है उसमें कॉस्ट ऑफ स्टार्ट स्टॉप क्यों होगा $10,22,000 $6,57,000 इसका टोटल 16,79,000 और इसका 8,17,600 and 5,25,600 43,200 so annual savings कितना 30 lakhs चलो ये स्टार्ट एंड स्टॉप हो गया फिर cost of operating the traffic light is 80,000 ठीक है ये अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल नेट बेनिफिट टू यूजर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो टोटल नेट बेनिफिट टू यूजर्स में ये आएंगे नाउ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द ट्रैफिक लाइट तो नहीं आएगा वो तो स्टेट का बेनिफिट है राइट 1 policeman is required to be posted for 3 hours a day ये भी नहीं आएगा due to failure to obey traffic lights 8 fatal accidents and 60 non-fatal on an average insurance settlements per fatal and non-fatal ये तो आएगा benefit to the society insurance companies are not supposed to be operated by the government भैया तुम भले ही LIC को भगवान मानो पर इंश्योरेंस कंपनी इज द प्राइवेट सेक्टर तो इसकी वजह से तो सोसाइटी को ही बेनिफिट हो रहा है ना उसको उतना क्लेम्स नहीं देना पड़ रहा है राइट सो
annual savings on इंश्योरेंस क्लेम्स कितना आता है फेटल का एंड नॉन फेटल, दो है ना. On an average, insurance settlements per fatal and non-fatal is 5 lakh into 8. By 4. 5 lakh into 8 by 4. Average in a year. 10 lakhs. And non-fatal 15,060. 15,000 into 60 by 4. 2,25,000. This would be savings on insurance payouts. Uh, 12 lakh 25,000. अच्छा एक काम करते हैं इसको ना, let us A, B, C. Now, gross benefits to society or users. कितना आता है 42, 47 and 73. How much? 70? 73, 40, 575. 73, 40. 575. But does this benefit come to the users without any cost to them? What is the cost that this guys will have to, the society has to bear? Huh? Huh? It will add a quarter of kilometer to the distance of 20% to the total traffic. And बाकी और क्या है, incremental expenses कितना आएगा? The incremental operating cost for commercial vehicle will be 5 per kilometer and 2 for non-commercial. So 5 per kilometer. और यहाँ पे quarter of kilometer 20% add करेगा. So that means less increase in cost to users. Highway X, highway Y. Highway X, private vehicle, commercial vehicle, and highway Y,
private vehicle, commercial vehicle. $10,000 into 0.7. और क्या है? एक मिनट. %20 of the total traffic. What will you do? It will add a quarter of kilometer to the distance of 20% of the total. It will add a quarter of a kilometer to a distance of 20% of the total traffic. That means इस ट्रैफिक का 20% को ये इफेक्ट होने वाला है और क्वार्टर किलोमीटर ऐड होने वाला है इंटू 0.25 और शिक्षा highway X commercial 10,000 into 0.3 into 0.2 into 0.25 हाँ रेट मल्टीप्लाई नहीं किया ना हाँ वही रेट कितना है 2 for private 5 for commercial 2 for private and 5 for commercial into ₹2 into ₹5. Yeah, Shrija, yes. $225 500 225 एक मिनट यहाँ पे कोई अलग दे रहा है 255 500 हाँ 255 500 ओके और कमर्शियल व्हीकल्स 270 500 कितना 2 270 500 529 250 529 250 रिमेंबर ये अपने को इधर से ये 73 40 575 से रिड्यूस करने का है ना एंड हाईवे Y 8,000 into 0.7 into 0.3 into 0.2 into 0.25 into 365 into 2 into 5
529,250 ये क्या है? 2,04,000, 2,04,400 and 2,19,000. 2,19,000. So 4,23,400. So net benefit to users. That will be this minus this and minus this. एक बार चाहिए ये figure? कितना आ रहा है? 638,79,25. 63,87,925. B. What will be the annual cost to the state? Annual cost to the state. Initial outlay? एक मिनट. Initial outlay कितना है? For what are we calculating? Annual cost to the state. Capital recovery rate दिया है ना? So that means investment cost will be 3 crores into 0.088. $26,64,000. 0.000. I hope everyone is clear on this capital recovery rate. ये 3 करोड़ का जो कॉस्ट है, सॉरी, हाँ बोलो, ये क्या है? ये रिकवरी रेट क्या है? What is the recovery rate? हाँ, यहाँ पे दे तो दिया है, cost of capital for the project is 8% and the capital recovery rate is 0.0888. So what do you mean? What is this implication? What do you mean by this? So the return on our investment types, like Exactly, return on investment type.
right? So that means ये जो government 3 करोड़ का project ले रही है, right? And for the government, remember, this is a cost, this is not a revenue, right? And it's planning to recover 8.88% every year. Okay, so that means the allocable cost every year, investment cost, this is, you can say, allocated every year. Then maintenance cost. एक मिनट, मेंटेनेंस कॉस्ट ऊपर है क्या कहीं पे? नहीं, नीचे तो फिर एक मिनट ऊपर से जाते हैं ना, क्या क्या है? अच्छा, ये तो सेविंग्स, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ड्यू टू फेलियर. ओके, रिटायर्ड कॉस्ट. एक मिनट, मेरे को कहाँ दिख नहीं रहा है यार ये. हाँ, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट वुड बी 70,000 a year. Maintenance cost 70,000 a year. Total 2734 less savings to state. क्या क्या है? ओके, लाइट्स. लाइट्स में कितना है? 80,000. and policeman. क्या 3 याद है मुझे, 3 पुलिसमैन थे. 3 hours. अच्छा, 3 hours. One policeman is required to be posted for 3 hours a day. So at a cost of 150 per hour. So 3 into 150 into 365. 3 into 150 into 365. 164. 164? 250. 250. 244, 250. That is cost to state. This is important thing is net cost to state कितना होता है? 20. 2734 minus 244, 250. 2489, 750. और क्या मांगा है? हाँ, cost benefit ratio. How do you calculate cost benefit ratio? PV of benefits upon PV of cost. पर तुमने जो ऊपर कैलकुलेट कर रखा है वो एनुअल बेनिफिट कैलकुलेट कर रखा है. एक मिनट. बेनिफिट्स
6387,925. 6387,925 into 1 upon 0. यही होगा ना, आप पर एनम इसको करके निकले तो टोटल तो दिस डिवाइडेड बाय दिस अपॉन कॉस्ट 2489,750 equals to कितना 2.57%. हाँ, तो मैंने एनुअल कॉस्ट कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके निकाला, वो एनुअल है तो टोटल क्या हुआ रहेगा 1 by this. ठीक है, चलो अभी अरे बट मनन कैपिटल रिकवरी रेट दिया है तो एवरी ईयर एलोकेशन उसका उतना ही होगा ना. They have given the capital recovery rate, no? ये depreciate थोड़ी कर रहे हैं. We are not depreciating this. Where the cost to user was deducted. Cost to user was deducted. ये answer should be in times, or you can give it in percentage also, it doesn't matter. You are saying that your revenue is 2 times this, actually times better. Come to think of it, this is times. Yes, you are right. Now, एक मिनट, कॉस्ट टू यूजर चाहिए था ना ये रहा. हाँ सर ये क्लेम बेनिफिट फर्स्ट रेशियो में मुझे प्रेजेंट करने का है. हमारे जो बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो था सो वी आर ब्रॉट इट टू प्रेजेंट वैल्यू, राइट? सो व्हाई आर वी यूज कैपिटल रिकवरी रेट फॉर लीडिंग टू प्रेजेंट वैल्यू? because that is your, ultimately that is going to be your rate of discounting. Then why interest is the cost of project interest as it is given? हाँ but capital, हाँ ऐसे ही दिया है. वो अगर 0.088 नहीं दिया होता कि वो हर साल कितना रिकवर कर रहा है तो हम 8% से काम कर लेते. That's all. सर इंक्रीज इन कॉस्ट टू यूजर्स में 0.5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? कौन सा? इंक्रीज इन कॉस्ट टू यूजर्स, हाँ क्योंकि ट्रैफिक 50% है ना. First, it's not that 50% of the users are going to use the flyover, no? Start and stop is because of the delay. और डिले बोला है 50% होता है. For this
आई मीन जस्ट इमेजिन रे, अगर तेरे को मुलुंड ईस्ट से वेस्ट जाना है और वो पूरा एक फ्लाईओवर के थ्रू जाता है, तो सारा ट्रैफिक तो फ्लाईओवर के थ्रू जाएगा, लेकिन उसमें स्टार्ट स्टॉप खाली 50% करते हैं, मतलब ओनली 50% ऑफ द ट्रैफिक इज डिलेड। डिस्टेंस तो सबका ऐड हुआ ना यार। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा। 20%। यस। स्क्रोल डाउन लिटिल, कितना शिवानी, कौन सा स्क्रोल डाउन करना है? सर जो कॉस्ट टू यूजर के नीचे वाला पार्ट था ना वो। कॉस्ट टू यूजर के नीचे वाला पार्ट, ये वाला। यस सर, दिस वन। यस सर, डन। Okay, now we take a break. On Jay and Priya, it's up to you. You can either sit silently and watch the whole proceedings, or if you have better things to do in life, which I'm sure you have, निकल सकते हैं. Okay? और no, Priya. Break के बाद we'll come back and do those 2 or 3 sums which are left. Right? Sure. Take a half an hour break. Half an hour and we are back. It's 10:30. We'll be back by 11. कल भी लेक्चर है? ओके नहीं, आई डोंट थिंक कल आपका लेक्चर होगा, बट यू विल रिसीव अ मैसेज. डोंट गो बाय माय वर्ड्स कि लेक्चर नहीं होगा. हो सकता है दे माइट आई मीन शेड्यूल समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ दिस. सो कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नहीं होगा, ऐसा बोलता हूं, क्योंकि इस स्लॉट में मुझे खाली कैपिटल बजटिंग एलोकेट किया है ना, सो आई कांट टेक एनी अदर टॉपिक. पर एनी अदर टॉपिक मतलब बाकी सबके लिए तो हो चुका है. Right, so you will receive appropriate message on wherever you receive, WhatsApp, Telegram, पता नहीं किधर. चलो, चल अभी आ रहा है आवाज? यस सर. यस, चलो. Ram Chemical is in production line of chemicals and considering a proposal of building a new plant. Let the present value of the new proposal is 150 crores. After considering scrap value at the end of the life, since this is a new product, survey indicates the following variation in the present value. अगर condition favorable रहा, then the present value will increase from 30% of the original estimate. That means this will go to 195. And if the condition is sluggish, in addition, Ram Chemicals has an option to abandon the project at the end of the year and dispose it off at 100 crores. Okay? Now, that means 100 crores is the right at which he can sell it. So, if the risk-free rate is 8%, what will be the value of the abandonment option? कैसा होगा? This is nothing but at 100, right? R equals to
8% and t equals to 1 year. So this is basically a binomial risk neutral model, right? So how do we solve? Let PU be the probability of PV of cash flows going up to 195 and PD be the probability of PV of cash flow going down to 90. Therefore, PD equals to 1 minus P. Do we have to write Simon? Obviously, करते जाओ ना चल ये सब तो हुआ है. फिर क्या करते थे? Value of abandonment option which is nothing but put on expiry if PV of cash flows goes up to 195. What will be the value of the put? Put with the strike price of, yes, Rishabh, 0. अच्छा सॉरी प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाला ही नहीं. प्रॉब्लम सॉल्व करने के जल्दी में प्रोबेबिलिटी तो निकाला ही नहीं. चलो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे? 150 equals to present value of future probable values (150) equals to 1 upon 1.08 into 195 PU plus 90 into 1 minus PU. ये सॉल्व करोगे तो PU मिलेगा. Six eight five seven. So let's take it as 0.69 and therefore PD is 0.31. So अभी ये value of abandonment option 0 with a probability of 0.69, 0 if PV of cash flows goes down to 90. इसका value हो जाएगा 10 with a 0.31 probability, that is 3.1. Therefore, value of abandonment option on expiry 3.1. Therefore, value of abandonment option today is the present value 3.1 into 1 upon 1.08.
हो गया? डन? ऑनलाइन? डन? स्क्रॉल अप डाउन. Sorry, ये जो 10 है सर, this is a difference of 190 ना. Which one? Yes. Right to sell at 100, no? And the market price is 90. Yeah. Yeah. Okay, चलो अभी let's come to ये 45 है ना, 44. Now 44. Ramesh owns a plot of land on which he intends to construct apartment or units for sale. Number of apartments to be constructed may either be 10 or 15. Total construction cost for these alternatives are estimated to be 600 lakhs or 1025. ये total cost है. And current market price for each apartment is 80. The market price after a year for apartment will depend upon the conditions of the market. If the market is buoyant, each apartment will be sold for 91 lakhs. If it is sluggish, the sale price will remain at 75, will be same as 75. Determine the value of the vacant plot of land. Assuming that construction cost will remain same in year 1. Should Ramesh start construction now or keep the land vacant? The yearly rental per apartment is 7 lakhs and the risk-free interest rate is 10% per annum. Assume that the construction cost will remain unchanged. Now see, ये institute का पुराना PM से उठाया हुआ sum है. Okay, this is not in your current module. But having said that, इसमें institute का जो solution है वो थोड़ा नहीं काफी गलत है. Because इसमें 3 situation आ सकते हैं जबकि institute ने खाली 2 situation consider की है. Now what are the 3 situations? 1, construct the flat now, sell the flat now. Right? Construct it now, sell after 1 year. Or 3, construct after 1 year, sell after 1 year. Right? Now, institute ने बीच वाला option तो consider किया ही नहीं. Construct now and sell after 1 year. Which therefore means, by implication it means तुमने एक alternative consider ही नहीं किया है, तो तुम्हारा solution तो optimal है ही नहीं. Right? Now, we'll consider all the 3 situations. तो हमारा आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर में फर्क आया. होपफुली अगर इंस्टीट्यूट इस सम को नया सिलेबस में इंक्लूड करता है तो दे शुड कम आउट विद द राइट आंसर. एंड कॉमन सेंस टेल्स अस, ये जो वैल्यू ऑफ वेकेंट लैंड बोला है ना, वैल्यू ऑफ वेकेंट लैंड इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट एवर फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू विल डिराइव फ्रॉम द लैंड. ठीक है, अगर वो लैंड में मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके 400 करोड़ में बेच सकता हूं, देन द वैल्यू ऑफ द लैंड विल बी 400 करोड़. Right? So the value of the land will automatically be derived once we derive the net present value of these 3 scenarios. ठीक है? So, और इसमें क्या है ना, first scenario, that is construct today, sell today, there is no question of probability. You only have to decide कि भैया 10 फ्लैट बनाना है कि 15 बनाना है. अच्छा, इसमें भी the decision would have been very simple because had revenue selling price of the flat तो सेम ही है 80 lakhs, राइट? और अगर कॉस्ट भी सेम होता और मेरा पर यूनिट अगर प्रॉफिट निकलता है तो सीधा 15 फ्लैट करो ना, राइट? बट सिंस द कॉस्ट इज डिफरेंट, वी नीड टू इवेल्युएट वेदर इट्स प्रॉफिटेबल फॉर मी टू डू 10 और 15. बट प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होंगे ही नहीं इसमें. ठीक है, प्रोबेबिलिटी कब इन्वॉल्व होगा? मैं आज बनाता हूं, 1 साल बाद बेचता हूं, तो मुझे मालूम नहीं भाव क्या होगा, या फिर बाद में बनाता हूं,
बाद में बेचता हूं तो उधर का सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता, कॉस्ट तो सेम ही है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो वो बाकी दो सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी आएंगे, पहला वाला सिनेरियो में देयर इज गोइंग टू बी नो प्रोबेबिलिटी। ठीक है नाउ, तो इसमें नाउ यू माइट आस्क सर इसमें रिस्क न्यूट्रल कहां आया प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, अभी का मार्केट प्राइस कितना है 80, ये एक साल बाद ऊपर कितना जा सकता है 91 + 7, एक साल का रेंटल इनकम 98, और नीचे कितना जा सकता है +7 82, राइट। क्योंकि अगर आप एक साल सी ये प्रोबेबिलिटी लाइक ए सेट कब आएगा, व्हेन यू कंस्ट्रक्टेड टुडे सेल आफ्टर 1 ईयर, तो खाली तो रखोगे नहीं, राइट। तो दैट मीन्स वो प्रोबेबिलिटी आएगा उसका। ओके नाउ let's see this. First, let us take this situation that is option 1. If flats made today and sold today, तो इसमें अपना 10 फ्लैट 15 फ्लैट रेवेन्यू और कितना है 80 into 10 800, this is and this is 1200 cost 600 1025। हाँ हाँ सी नाउ नाउ वी आर कमिंग टू दिस। इंस्टीट्यूट ने क्या किया मालूम है, ये इसका टोटल कितना है 200 और उसका 175, तो उसने क्या बोला कि 200 इज द ऑप्शन। इस केस में ठीक है, राइट, बट डज इट नेसेसरली हैव टू बी दैट, नो ना, बिकॉज व्हाट यू नीड टू, हो सकता है 15 फ्लैट में टोटल में ज्यादा आ रहा हो लेकिन पर फ्लैट देखोगे तो कम आता हो, है वो तो इंस्टीट्यूट कंसिडर ही नहीं किया है। इस केस में दोनों तरफ देखोगे तो आंसर सेम ही आएगा, राइट, विच मीन्स under this option beneficial to construct 10 flats. Option 2, अच्छा एक मिनट सॉरी, बिफोर ऑप्शन 2 एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल के रख लेते हैं, इसको हटा ही देता हूं मैं। That is
Now let same thing. Let PU be the probability of price going up to 98. And PD be the probability of price going down to 82. Therefore, PD equals to 1 minus PU, and 80 is equals to 1 upon, what is my rate? 10%. 1 upon 10 into 98 PU plus 82 into 1 minus PU. Therefore, PU equals to how much? Point? Sir, point 37. We could have taken this point. 38 also. चलो लिख दिया, अभी लिख दिया. Okay. Okay, अभी option 2, if flat constructed today and sold after 1 year. अच्छा, कंस्ट्रक्ट तो आज कर ही रहे हो, ओके, एंड दैट मींस नाउ यू विल हैव टू से कि यार 10 फ्लैट्स का क्या होगा और 15 फ्लैट्स में क्या होगा. नाउ इन दिस केस, सी यू आर गोइंग टू अगेन डू द रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, बट व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस. ये सिचुएशन सोच के देखो, आप आज खड़े हो और फ्यूचर में आपको दो प्राइस दिख रहा है, 98, 82. You're going to construct it today, right? तो मैं अगर बोलूं कि यार थोड़ा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालो, तो कैसे निकालोगे? मैं रिफ्रेश करता हूं. तुम 1 साल के बाद फ्लैट बेचने वाले हो एंड यू से सर प्राइस 98 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, एंड ऐसे यार जो भी है तो मेरे को एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के देना. तो आप सेलिंग प्राइस क्या लोगे? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका सम. सेलिंग प्राइस दो हो सकते हैं ना, तो यू वुड सी दैट मीन्स एवरेज सेलिंग प्राइस in this case would be
This is 88 lakhs. No? This is the average revenue that you expect from this flat, and obviously ये भी 80 होगा. हाँ? अच्छा, that means total revenue would be 880, and this would be 1320. But एक मिनट, what are you calculating? NPV of the decision आज. And ये सिनेरियो कौन सा है? Flat is constructed today, sold after 1 year. तो आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तो आज आ जाएगा. एक मिनट, लेट मी जस्ट चार्ज दिस. तो क्या करें? सेलिंग प्राइस को डिस्काउंट करना पड़ेगा. हाँ, या तो कॉस्ट को करो, है. सो अरे यार, ये निकल गया क्या? एक करता हूं तो एक निकल जाता है. एक मिनट. हाँ, ये आते आते selling price discounting, yes, Srija. So present value of revenues, right? This would be 880 divided by 1.1 and 1320 divided by 1.1. 1200 less cost 600 and एक मिनट. सेम आ रहा है, and now actually speaking, now you know why Institute has not done this. Same. पर बोलो तो सही कि ये एक ऑप्शन है. You have to tell no कि this is another option. Anyway, option 3, if flat sold and constructed, after 1 year. Now, यहां पे अपने को सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई जब सेकेंड ईयर में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, शुड आई कंस्ट्रक्ट 10 और 15, राइट? पहले तो वो डिसीजन लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आज जब हम कर रहे हैं तो हम तो एवरेज सेलिंग प्राइस ले रहे हैं, लेकिन जब ईयर 1 के बाद कंस्ट्रक्ट करेंगे द आइदर द प्राइस विल बी एट 91 और 71, राइट? तो एट दैट टाइम यू हैव टू एनीवे डिसाइड कि भाई 10 बनाना है कि 15 बनाना है, राइट? सो फर्स्ट लेट अस डिसाइड. सी, फर्स्ट we need to decide whether to construct 10 flats or 15 flats. And understand what we are trying to do.
हम पहले ये डिसाइड कर रहे हैं कि 10 या 15 जो भी मेरे को हायर प्रॉफिट देगा वो मेरा डिसीजन होगा और उसका प्रेजेंट वैल्यू विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसीजन टुडे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू दैट इज 10 flats, 15 flats. अगर सेलिंग प्राइस $91 lakhs रहा तो मेरा रेवेन्यू $910 and 15 into 91, 1365. Cost 600, 1025. Cash flows, net cash flow 210, and this is 340. हाँ, Net cash flow other 10 lakhs. अच्छा, this is 310. Okay. तो इसका मतलब अगर if my revenue is 91, I mean if the sale price is 91 lakhs, it makes sense for me to हाँ बोलो 10 lakhs. हाँ, but here what they are seeing is cash flows. They're saying total cash flow मेरा किस में ज्यादा आ रहा है, right? And if the profit is, I mean, if the price is 75 lakhs, then my revenue 750 lakhs and 75 into 1125 and cost 600, 1025. $150 and this will be 100. In this case, $10 flats, right? That means if 91 गया तो मेरा revenue would be 340, and if 75 गया तो my cash flow will be 150. So what is my expected cash flow? What is my expected cash flow? 340 into the probability, 150 into the probability, उसका present value, right? So PV of expected cash flows that is if price is 91, then my cash flow is 340 with a probability of 0.375, and if price is 75, it's 150, 0.625. Expected cash flow 340 into 0.375 is 127.5, and 150 into 0.625 is 93.75. That means total expected cash flow 127.5 plus 93.75. कितना है? 221.25. हाँ, present value of expected cash flow is 221.25 into 1 upon 1.10. 201.14.
Acha, of all the three options, under all the three options, where is my maximum expected cash flow happening? Under option 3, right? And option 3 ka expected cash flow we are looking at 221.25. Under, if you construct the house after 1 year and sell it after 1 year, you are expecting a cash flow of 221.25, and this is the maximum that you can expect, right? That means this should be the value of the land. Anyone would be willing to pay maximum this much only for the land, right? But this is the value afterwards. So ये जो 201.14 है, this should be the value of the land today. बराबर है? हाँ श्रीजा बोलो. सर मुझे ये पूछना था कि जो हमने ऑप्शन 3 में सिलेक्ट किया, उसमें पहले हमने नंबर ऑफ फ्लैट्स इसलिए सिलेक्ट मतलब उसका पहले वेट इसीलिए किया क्योंकि हम फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट बाद में करने वाले हैं, तो हमारे पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, और 2 में इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एट दिस टाइम ही हम पे ऑफ कर रहे हैं. Exactly. So that means, therefore, 201.14 is the अच्छा, तुम इससे ज्यादा मांगोगे, will anyone be willing to pay? वो बोलेगा नहीं यार, ये जमीन में मैं लैंड बेच बिल्डिंग बना के बेच के मैं इतना ही कमा पाऊंगा. दिस इज द मैक्सिमम आई कैन पे, राइट? सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लैंड. सी ओके, हाँ मानो बोलो. सर इसमें थर्ड पार्ट में हमने जो प्रोबेबिलिटीज अप्लाई की है हाँ रुको, मैं उसी में आ रहा हूँ मैं उसी में. थर्ड पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी कंसिडर किया है, इंस्टीट्यूट हैज कंसिडर्ड दिस 0.375 0.625 व्हिच अकॉर्डिंग टू मी इज रॉन्ग. क्योंकि when you are going to construct the flat after 1 year and sell it after 1 year, there's no question of rent. 91 and 75 मानव, यही क्वेरी था ना तेरा? हाँ सर, हाँ बिल्कुल. और इसके अलावा दूसरा एक क्वेरी ये था कि जब सेकेंड पार्ट में हमने कैलकुलेट किया तभी हम लोग ने वो +7 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि दैट इज नॉट कैरिंग एनी प्रोबेबिलिटी ना, वो 7 तो मिलना ही है. अरे बट 7 into 0.375 plus 7 into 0.625 तुम दोनों जगह ऐड कर रहे हो ना. दैट कम्स टू 1 पर 80 लाख इज द फ्लैट का वैल्यू ना एज ऑन टुडे. तो 91 and 75 हम लोग फ्लैट का वैल्यू लेंगे. 91 and 75 is the revenue that you expect to generate from the flat. Yes sir, but 80 is value of flat Today. yes. हाँ, तो हम लोग ने वो 7 क्यों ऐड किया वो नहीं समझा सर तभी. अरे 7 तो ये दिया है ना. सी तुम्हारे पास जो फ्लैट है वो अगर 7 लाख रुपया का रेंट कमा सकता है, देन द वैल्यू ऑफ दैट फ्लैट विच यू विल डिमांड फ्रॉम एनीवन, yes, at the end of year 1 would be दिस. price then and 7 lakh rupees per year. और एक्चुअली आप लोग फ्लैट का भाव देखते हो ना. Do you know, in reality, it is not the flat ka bhav. It is the present value of the future rental incomes that the flat can generate. Yes sir, yes. है ना? Okay, thank you. Yes. We should have revised the probability. वो थर्ड सिनेरियो का अपने को probability रिवाइज करना चाहिए. पर क्या करें यार, अभी इंस्टीट्यूट का this is what institute has done. एक मिनट, स्क्रॉल अप डाउन कुछ करना है, बताओ. हो गया, ठीक है. अभी ये समझे तो see, this year I was not involved in making of this chapter, but next year I'm definitely going to remove this sum. I mean, it's
pointless doing these sums because एग्जाम में आएगा तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, 3 घंटा इसी में निकल जाएगा. ओके, सो ठीक है, हम क्लास में you can feel happy about saying अच्छा tough sums करवाए, but the reality is ये sum अगर आया तो please don't try attempting it. दूसरा कुछ ट्राई कर लो, थियरी कर लो. ओके, दिस क्रेजी. आधा चीज इन लोगों ने खिचड़ी पकाया, आधा गलत किया है, और फिर भी you own an unused gold mine that will cost 10,000 to reopen. If you open the mine, you expect to extract 1,000 ounces of gold a year for each of the 3 years. Meaning, ये mine का life is 3 years depending on when you begin. Like if you begin today, 3 years. If you begin after 1 year, 1 plus 3, 4th year, and so on. Because 3rd year के end पे the mine will exhaust. After that, the deposit will be exhausted. The gold price is currently 5,000 an ounce, and each year the price is equally likely to rise or fall by 500. मतलब probability is 50%. Okay? By 500 from its level at the start of the year. The extraction cost is 4,600 an ounce, and the discount rate is 10%. Should you open the mine now or delay 1 year? What difference would it make if you could costlessly but irreversibly shut down the mine at any stage? मतलब आपके पास abandonment option है. मतलब आप देखो यार, ये सम ना 2 बड़े बड़े पार्ट हैं. One is with abandonment, and in दोनों में there are 2 produce now after 1 year. ये चारों अपने को सॉल्व करना है, राइट? ओके, नाउ लेट्स डू विदाउट अबैंडनमेंट ऑप्शन. ठीक है, पहले ये लिख लो ना, फिर चालू करते हैं यार. साथ में ही करते जाना, वरना मेरे को करने में 1 घंटा जाएगा, फिर आपको कॉपी करने में करना. हाँ, yes, Rishikesh. Calculation of NPV if mine open today.
ये क्या होगा? दिस इज अभी प्राइस कितना है? 5,000. 5,500, 4,500, 6,000, 5,000, 5,000, 4,000, 6,500, 5,500, 5,500, 5,000, 5,500, 4,500, 4,500, 3,000. What is the cost of mining? That means the payoff at everywhere here, it would be 900. And here it would be negative 100. Here 1,400. $400. And negative 600. Okay. Here 900. No, 1,900. $900. 400. 900. Negative 100. Negative 100. Negative. How much? 1,100. तो जो लास्ट कॉलम में है फोर्थ वाला 5,000 है वो सर 4,500 होगा ना? अच्छा हाँ, ये 4,500 होगा, ये वाला ना? हाँ हाँ सर, राइट. $4,500. So this would be negative 100. सॉरी, ये 4,600 से कंपेयर क्यों किया? हाँ, 4,600 से ये मतलब जो अरे दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एट ईच लेवल ऑफ प्राइस ना? करेक्ट. So instead of saying revenue minus cost net and then उसको डिस्काउंट करना, राइट इसी को कर देंगे. अच्छा, अभी सी वी आर इवेल्युएटिंग, अगर माइन आज ओपन करें तो, और इसमें कोई अबैंडनमेंट का ऑप्शन नहीं है. जो भी है आपको पूरा जर्नी खत्म करना है, राइट? लॉस हो, प्रॉफिट हो, व्हाटएवर इट इज. दैट मींस द एनपीवी will be, see first let us do something, calculation of expected value of cash flows.
for year 1. Now remember, this is year 1. Huh? अच्छा, year 1 का क्या होगा? 5,000, sorry, 900 into 0.5 plus minus 100 into 0.5. ये होगा ना एक्सपेक्टेड वैल्यू? कितना होगा ये? 4,500, 450 minus 50, 400 into 1000 ounces. वो 1000 ounce माइन करेगा, तो 4 लाख रुपए ईयर 1 का. ये अभी तक हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम खाली एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल रहे हैं, राइट? ईयर 2 का क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? Can I write this? देखो, इसका तो सिंगल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये 1400 का तो 0.5 और ये 0.5 जॉइंट प्रोबेबिलिटी. सो दिस विल बी 1400 इंटू 0.5 स्क्वायर, 400 इंटू 0.5 स्क्वायर. तो 0.5 स्क्वायर को कॉमन ले लो और अंदर सबको ऐड कर दो, राइट? कितना होता है ये? 800, 200, 1600. नहीं, कितना होता है? 400 into 1000. 4 लाख. एंड ईयर 3 का 0.5 होल क्यूब into 1900 plus 900 plus 900 minus 100 plus 900 minus 100 minus 100 minus 1100. ये भी वही आएगा, and I'll tell you why. प्रोबेबिलिटी सेम है, क्वांटम ऑफ चेंज सेम है, तो प्राइस तो वही आना है ना. Therefore, NPV year 1, 2, 3 cash flows 4 lakh, 4 lakh, 4 lakh. This will again be 400 into 1000. Okay? इसको आप डिस्काउंट करो at what rate? 10%. 10%. You'll get the discounted cash flow, और discounted cash flow में से less initial cash outlay 10 lakh, and see what is the NPV.
हाँ हाँ, जैसा करना है करो ना। नेगेटिव 5280। 994,720 ये क्या है? अच्छा ये वाला 994,720। तो इसका मतलब डिसीजन क्या बनता है कि भाई आज के दिन इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड is 5,000 or less than 5,000, then it doesn't make sense to open the mine at all today. Now, why 5,000 or less? Because 5,000 में ही अपना एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, तो उसके नीचे रहेगा तो नेगेटिव ही होना है. Therefore, conclusion, if the current market price of gold is 5,000 or less than 5,000 on the day of opening the mine, it makes no sense to open the mine today. Okay. अभी ऑप्शन 2, open the mine after 1 year without now see after 1 year if you open the mine, you will not open it when the cost is 4,500 क्योंकि वो तो हमने डिसाइड कर ही लिया था कि भाई on the date of opening if it's less than 5,000 there's no point in opening the mine. That means you are only looking at this scenario, right? So अगर आप ये सिनेरियो देख रहे हो तो आपका कैश फ्लो अभी क्या होगा देखो. अरे ऋषिकेश ये मेरा यार तू मेरा जान मत खा रे. ये रहा you are looking at 5,500. हाँ, but remember you are starting the mine after 1 year, तो इसका अभी कैश फ्लो वहां से 3 साल चलेगा, right? Which means ये 6,000, 5,000, 6,500, 5,500, 7,000, 6,000,
6,000, 5,000 और यहाँ पे 5,500, 4,500, 6,000, 5,000, 5,000, 4,000. Now we'll have to do the same process. That is, at every level, 1,400, 400. 1,900, 900, 900, negative 100, 2,400, 1,400, 1,400, 400, 1,400, 400, 400, negative 600. Okay. Expected cash flows. Expected value of cash flows. Year क्या लिखे, ये एक्चुअली टेक्निकली है तो year 2, पर इस पूरा चीज के लिए तो year 1 ही हुआ है ना, तो year 2 लिखते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं which is actually year 1. अच्छा, ये year 2, year 3, year 4 लिखने का क्या रीजन है, क्योंकि इसका जो भी एनपीवी आएगा ना उसको एक और साल से डिस्काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि दिस एनपीवी इज एज ऑफ year 2, राइट. हाँ, एक और से डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं वो year 2 लिख रहा हूं, राइट. सो दिस वुड बी 0.5 into 1,400 plus 400, that is 900 into 1,000, 9 lakhs. And trust me when I say this, year 3, year 4, it should still be 9 lakh, 9 lakh ही होना चाहिए. Only thing is, यहाँ पे आप जब लिखोगे तो you will write 0.5 whole square into 1,900 plus 900 plus 900 minus 100. ये 900 into 1000 देगा आपको हो गया, एंड ये होगा 0.5 whole cube into ये पूरा रे राम कहानी 2,400 plus 1,400 plus 1,400, 400, 1,400, 400, 400 and minus 600.
इसका कैसे करने का है? आई मीन विच एवर वे यू वांट, या तो इसको ईयर 1 2 3 करके एक एक नॉर्मल डिस्काउंटिंग और फिर इसको एनपीवी, और यू कैन से ईयर 1 2 3 4, 1 में कुछ नहीं, अच्छा ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, हाँ है ना, चलो पीवीआईएफ एट कितना था, 10% ना, 10% discounted cash flow, this would be the PV less initial outlay. ₹10,00,000 1034, 697. क्या, एक मिनट, एक मिनट, इसमें एक प्रॉब्लम होगा, मेरे को अभी ध्यान में आया, क्या प्रॉब्लम आएगा, बोलो क्या प्रॉब्लम आएगा, मेरे को अभी ये डायग्राम देख के याद आया, ये डायग्राम देख के याद आया, आप लोगों ने क्या किया, यहाँ का एनपीवी कैलकुलेट किया, राइट, हाँ, ये फिर जब कैलकुलेट करोगे तो इसका प्रोबेबिलिटी लगेगा ना, क्योंकि ये 5,500 जाने का तो प्रोबेबिलिटी है 0.5, है ना, हाँ, तो माय बैड, सॉरी, मेरे को डायग्राम देख के फिर स्ट्राइक किया, तो चेंज कर सकते हैं, पर वो बाद में फिर आपको तकलीफ देगा यार, इसको ऐसे ही करो, ये निकालो, आई डोंट नो व्हाट दिस विल कम, वन टू थ्री 8120, चल ये एनपीवी है क्या कि 12810, but this is the NPV after 1 year. Therefore, NPV of the decision today will be 1238120 into 1/1.10 into 0.5. श्रद्धा, लेकिन फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर करना पड़ेगा आपको, फाइव सिक्स टू 782,
ऋषिकेश ये इतना आप की और आप Done, done, done. क्या? अच्छा, that means without the abandonment option, which is the best alternative? To start it today? Obviously not. So therefore, ये तो बात ही नहीं है discounting factor होता है मतलब that 1 year is actually the second year. तो correct. So you brought, तुमने ये जो discounting किया by taking this as 1-2 year, right? You bought it to the value at the beginning of the second year, right? तो beginning of the second year मतलब you basically bought it till the end of the first year, right? और फिर हमने इसको एक बार डिस्काउंट कर दिया. Okay. Now we have 2 more options to evaluate. But the second one is the problem because यहाँ पे क्या है? Once you started the process of mining, there was no looking back because you did not have the right to abandon. आपको पूरा जर्नी खत्म करना है. लेकिन उधर प्रॉब्लम यह है कि you have the right to abandon. So therefore you will have to see कि उस decision tree में under each of the situation आप कितना दूर तक जाओगे और किस स्टेज पे जाके आप छोड़ दोगे. तो आपका जो कैश फ्लोज है वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा. सो ऑप्शन 3 is start mining today with now एक मिनट मैं I have an advantage ठीक है. ये तो यही रहेगा. But everyone listen carefully. यहां पे आने के बाद आप अबैंडन कर दोगे क्योंकि जैसे ही आप सेकेंड ईयर में 4000 में पहुंच गए, द मार्केट प्राइस गोज टू 4000, देन आगे आपको सिर्फ लॉस ही लॉस दिख रहा है, which means you will say was abandon it, which means these cash flows you need not consider only. Okay, now you will say, sir, then what about at 4500? 4500 में you will still continue because there is a possibility that ये 5000 जाके 5.5 चले जाएगा. तो आप 4500 में तो हाथ में उठाओगे, राइट? बट 4000 अब कुछ भी हाथ पांव मार लो यार, वो लॉस ही होने वाला है. You will abandon, which means these cash flows you will never give the opportunity to arise, right? Which means now when you are calculating the expected value of the cash flows, same process, but पहले वाले में हमने ये दो भी लिया था, इसमें ये दो नहीं ले लिया था, राइट? ओके, सो नाउ अच्छा, इसका मतलब एक मिनट, लेट मी जस्ट नेम दिस नोड्स A,
maybe I'll use a different thing. A, B, C, D, E, F. See, at A, will you abandon? This is A. You'll not, right? So, no abandonment. B, no abandonment. C, no abandonment. D, abandon. And E, no abandonment. And F, no abandonment. लेकिन F में you'll have to be careful. F में we'll anyway have to check कि कहीं ऐसा ना हो कि present value of the cash flows is coming to negative. Present value देख रहे हैं ना, right? कहीं present value negative तो नहीं आ रहा. Of course, see when you said no abandon, I took it because मैं बाद में calculate भी कर दूंगा कि वो positive आ रहा है, क्योंकि वो negative आया ना तो हम उसको 4.5 में ही abandon कर देंगे, right? But we'll come to that. चलो ये डायग्राम बना लो और ये लिख लो. ओके, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, क्या कौन अटेंड करेगा इसको? फालतू में ये सब क्वेश्चन डालो पता चलेगा. हाँ, तू अबैंडन कर देना इसको. वो माइनिंग अबैंडन कर रहा है कि नहीं, तू क्वेश्चन अबैंडन कर देना. हाँ मनन, वैसे मैं वही बोला अभी यहाँ पे कि ये पेपर में भी आया था, इसको अबैंडन ही कर देना बस. इसको करना तो अभी वो मिहिर है जो CFA पढ़ाते हैं, उनसे ऐसे ही अभी बात चल रहा था, तो उनका लेवल 1 में, राइट, स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, उनका अलग रोना है, सेइंग दैट लेवल 1 का बच्चा जो अभी मतलब क्लास 12 खत्म करके बीकॉम 13th ईयर में आया है, उसको इंटरेस्ट रेट स्वैप फिक्स टू फ्लोटिंग और फ्लोटिंग टू फिक्स कॉल पुट उसको क्या समझ में आएगा, उनका अलग रोना है. बट द फैक्ट व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, राइट, CFA का लेवल 1 बच्चा इंटरेस्ट रेट स्वैप कर रहा है और हम यहाँ फाइनल में आके 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू कर रहे हैं. थिंक ऑफ अच्छा, F का तो बाद में अपन वर्किंग दे देंगे. रेफर नोट ये बाद में दे देंगे अपन. फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू
of cash flows. Year 1. .5 into 900 minus 100 400 in 9 lakh ही आना है, sorry 4 lakhs. Year 2, 0.5 whole square into लेकिन ईयर 3 में संभालना, ईयर 3 में 4 लाख नहीं आएगा क्योंकि एक ब्रांच डिस्कार्ड हो रहा है, राइट? सो ईयर 3 में इट विल बी 0.5 होल क्यूब into 1999 minus 100 900. हाँ पता है, अच्छा ये पता नहीं मेरे को ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर में कौन डाला, ये मैं क्यों ये करा रहा हूँ, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है? एक और 100 है ना, एक और 100 है. See, at the age of 55, I'm doubting the purpose of my life when I'm taking this chapter. कितना आया? कोई बताओ ना यार. 5,50,000. श्रीजा जियो 5,50,000. Therefore, NPV year 1, 2, 3. One zero seven 415. Then option
4. Start mining after 1 year. Sorry. Before that, ये नोट था ना, as node F. We should not abandon the project as the NPV is positive as under. See, when you're standing here, what is the expected cash flow that you're looking at? 400, 600? And 600 पे जाएगा तो anyway आप तो abandon कर दोगे, तो आपका potential cash flow is this, क्योंकि ये तो होने के बाद ही आप abandon करोगे ना, right? And this बराबर है, हाँ? So that means at node F, expected value of cash flow for year 1 would be 400 into 0.5 plus minus 600 into 0.5. So this would be कितना? 200, 300 minus 100 into 1000. 1 lakh negative. And for year 2, it will be 0.5 whole square into सिर्फ ये 900 और 100, 900 minus 100. $200 into 1000, 800, 400, 200, 2 lakh. That means NPV year 1, 2, cash flow negative 1 lakh and 2 lakhs, PVIF at 10%, discounted cash flow यहां पे minus 10 lakhs मत करना, क्योंकि रिमेंबर यहां पहुंचने के पहले ही आप 10 लाख इन्वेस्ट कर चुके हो, so that is a sunk cost now, right? Now you are only looking at from here how much. Yeah. $74,380. So since NPV is positive, it makes sense to continue the operation
at node F. अभी अपना चौथा वाला start mining after 1 year. Srija, after solving 44 problems, do you really want to stick to this? Srija is asking, sir, is it 74,370 or 74,380? सृजा, अभी मेरी जो हालत है ना, आप 74,000 बोलोगे तो भी मैं हाँ बोल दूंगा। नहीं नहीं, बट ठीक है, इट कुड बी आइदर, बिकॉज मैंने पूरा फाइनेंशियल कैलसी में डाल के निकाला तो वो पूरा आ गया हो। ठीक है, हाँ अभी नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला इज दिस सम इन द मॉड्यूल? नहीं, आप लोग का नया मॉड्यूल में नहीं है रे भाई। हाँ? एग्जॉस्ट कर दिया सब, बिल्कुल यार, सब बिल्कुल। तुम लोग को एग्जॉस्ट कर दिया, जरा सोचो यार, मैं एरर डेरिवेटिव्स और वो ट्रेड वो सब कराने वाला है। हाँ, मैं इंटर का एक टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं छोड़ दूंगा इसको, मैं अभी बोल के छोड़ दूंगा इसको, मेरे से नहीं होगा ये चल। हाँ, हाँ, ये देख, मनन बोलता है सम स्टार्ट किया था तब ब्रेकफास्ट किया था, खत्म करते करते लंच का टाइम आ गया। अच्छा, इसमें भी एक मिनट, बिफोर बिफोर यू स्टार्ट कॉपिंग, मैं अपना काम कर देता हूँ। ये जो ये ये वाला जो है ना, यहाँ पे आप फिर अबेंडन कर दोगे, क्यों बोलो तो? उधर तो इन द लास्ट डायग्राम बोथ वर नेगेटिव, सो इट द डिसीजन वाज इजी। यहां पे भी आप कर दोगे, क्योंकि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन? 400 इंटू 0.5 एंड -600 इंटू 0.5। कुछ भी हो जाए, ये तो नेगेटिव ही आने वाला है, तो मतलब यहां आके तो आप यहां आने के बाद इसको तो अबैंडन कर दोगे, राइट? सो अभी करो।
सर इसमें भी 5500 को प्रोबेबिलिटी करना है क्या, उसका कुछ नहीं, तो लास्ट में करेंगे। हाँ लास्ट में हाँ जी। $9,25,000। इसीलिए 1050 किसका है रे भाई? कितना आया? 12,56,903। हाँ 12
So 5,71,320. 5,71,320. Huh? The intent is counting the equity by. So shouldn't I be discounting the present value cash? Then it is being counted and then. If you are setting up the mine after 1 year, then that is also as per at that point in time only, no? But the objective of bringing the present value because I am assessing as of the first year, हाँ right? हाँ The second year में जब उसको मैंने discount किया, 1 मिनट, तू यहाँ पे खड़ा है. This is 1 year, right? You are planning to set up here, right? So तूने यहाँ का सारा कैश फ्लो इधर ला दिया, कैश इनफ्लोस, और तू फैक्ट्री माइन ऑपरेशन सेटअप भी यहीं पे करेगा, तो 10 लाख इधर ही स्पेंड करने वाला है तू. after 1 year. एक मिनट, just 1 minute. Therefore, with the abandonment option, beneficial to start mining after 1 year. Do we have lecture tomorrow as per TT? Definitely won't be mine, right? क्योंकि ये तो चैप्टर खत्म हो गया. But wait for the message on Telegram, you'll be informed. So ये presume मत कर लेना कि मेरा नहीं है तो फिर नहीं हो, ठीक है? You will get a message. Maybe simulation analysis is where you take random numbers and simulate various scenarios. You generate random numbers and then uska cumulative low. I mean, there's a whole methodology by which you would take simulation. But module में जो simulation है वो खाली explanation purposes के लिए, problem उसमें कुछ नहीं है. You just take a series of random numbers and simulate various scenarios. Option 3 conclusion here, and option 3 conclusion is here. Surya. Option 3 conclusion here. Yes, one lecture is completed. So option 3 का ये
बाय इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट, एक मिनट ये रिकॉर्डिंग बंद करने का यार।